मूव इन द बैंक। ओके अभी आप उस समय अगर उसको आपने वीकली में राइट कर लिया तो आपका 100 रुपये वाला ऑप्शन जी 3,000 में बंद होगा। ओके तो दादा उसके लिए तो आपको मेहनत करना होगा ना, डिलीट कैसे आएगा। बिल्कुल दादा वही कर रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। अरे मेरा दादा देखिए, मेरा आपका सपोर्ट का बात नहीं है जी ये 40,000 फुट में 38,000 फुट में मैं और आप डेली देखते हैं ना ये वीडियो। जी जी बताओ आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना। हाँ जी लेकिन आपने इसका इसलिए में सोचा कि नहीं सोचा क्यों हाँ जी ये खड़ा है जो नुकसान दे रहा है। करेक्ट दादा, ये तो आपको सोचना चाहिए ना कि ये मैं कैसे सोचा आपको दादा मुझे लगता है ये वही कर सकता है जिसके पास बहुत लार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। दादा देखिए क्या होता है कि गौतम का है ना, गौतम मुजुमदार है, मैंने उनसे एक बार बात किया था ऐसी चीज को, ठीक है कि दादा ये बड़ा बड़ा जो आईटीएम ऑप्शंस में जो सेलिंग होता है वो क्या है। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया कि विजय ये सब बेसिकली हेजिंग होता है, हेजिंग अगेंस्ट द पोर्टफोलियो या हेजिंग अगेंस्ट द फ्यूचर, मतलब कुछ कार्ड होता है जो मेरे और आपके लेवल के ऊपर है। तो आई एक्सेप्टेड इट कंप्लीटली। वो एक महीना हो सकता था ना, लेकिन हर महीना को क्या क्यों नुकसान है। लेकिन मैं आपको लाइव दिखाता हूँ व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डू। एक सेकंड रुको, मैं भी आपको देता हूँ। अपने सेशन चालू करेंगे अभी 8 मिनट के लिए, तब तक आप ये थोड़ा टाइम पास करें। अभी कैन यू सी दिस? Yes, sir. दादा प्लीज 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 म्यूट योरसेल्फ व्हेन यू आर नॉट I'm टॉकिंग। able to see it. कैन यू सी दिस? Yes, yes. Yes, Dada. This foot, this is 38,000 foot, correct? The expiry is 30th June, means last monthly expiry. The close was 1358 on 4th of April, and on 30th June the close was 4585, correct? तो पैसा तो लगा किसी का लगा। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इज नॉट स्मॉल बॉक्स, 30,000 60,000, एक्चुअली दिस इज फ्यूचर्स, दिस इज नॉट अ ऑप्शन बॉक्स। आप ये सोचिए, यस सर दिस इज फ्यूचर, दिस इज नॉट ऑप्शन। अभी आप देखो इसका जुलाई में भी काम चालू हो गया, जुलाई का क्या 28 जुलाई है ना आपकी एक्सपायरी जी। वो एक्चुअली ही इज बेटिंग ऑन द फैक्ट कि कभी तो ऊपर आएगा। नहीं दादा, ये आपका मेरा मिस्टेक है। अपने तो सोचते हैं दादा कभी ये हेजिंग नहीं होगा क्या दादा? जो बड़े लोग नहीं, मेरे बात सुनिए, ये हेजिंग हो सकता है, ठीक है, वी जस्ट कैन नॉट डिस्काउंट इट, ये हेजिंग हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि कोई इनसाइडर है जिसको कुछ पता है कि कुछ एक सडनली बड़ा न्यूज आने वाला। अभी आप मैं इसका मतलब क्या होगा आपको समझाता हूँ। रिलायंस का जो न्यूज, ठीक है, वो न्यूज कितना बजे फ्लैश हुआ? एग्जैक्टली 9:15। कोई किसी को भी पोजीशन लेने का मौका नहीं मिला, नहीं, जो भी वो मार्केट में कांड हो गया, सडनली 8% 9% रिलायंस डाउन, ठीक है ना। अभी आप ये सोचो कि यही चीज किसी को तो पता होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अरे किसी को तो पता होगा, किसी को तो होगा। वो पैसा नहीं कमाया होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा, वो कब रहेगा? हमको लग रहा होगा वो फिर एक को कमा गया। अभी आप ये देखो, ये अपना जुलाई एक्सपायरी आ गया, हाँ 76,000 ऊपर इंटरेस्ट इज 28,000 दिख रहा है आपको? जी जी। ये क्यों हो रहा है? यार गाइस हु आर नॉट सर टॉकिंग प्लीज सर काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से। तो ये सब डिस्कशन आपको कोई नहीं करेगा ऐसे। एनीबॉडी हु इज नॉट टॉकिंग टू विजय सर प्लीज म्यूट। दादा else if I will mute you ना, you will not be able to talk to me. हाँ दादा बताइए। अभी आप सोचो in this month also यार सर काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से। I need to mute. If I mute you, then you will not be able to talk. Just see this. In the July month also, here he started trading the position. See? Yes, तो मतलब डे भी है, ये 30 जून का है ना, देखिए मैं इसको 1 जुलाई का अपडेट कर दूंगा। देखिए 49,000 था, सी हियर 44,000, 49,000, 76,000, कुछ तो है दादा। अभी मेरा और आपका क्या काम है कि ये बंदा कब ट्रैप हो रहा है ये हम लोग को, और ये आप एक दिन या 2 दिन में नहीं पकड़ सकते, बट दिस विल, अगर आपको ये ट्रैप एक महीना मतलब वॉच करने के बाद अगर एक बार भी ये ट्रेड मिल गया ना,
It will be your 6 months earning within a week. तो ये देखना होगा, ये सारा चीज क्या अपने को मतलब देखिए, this can be a hedge, this can be something which we don't know or we will not be able to anticipate, which is above our knowledge. All those points are accepted, correct. But what is my point? I just want to see when this guy will get trapped. The day he will be trapped, I will trap him back. That is the my point. कि मेरे को ऐसा ट्रेड लेना है जहाँ पे आई एम कॉन्फिडेंट दैट बॉस मैं 2000 वाला पुट बेच के जा रहा हूँ. आई नो टुमारो इट इज गोइंग टू ओपन इट. This is the way I trade, and this is the way I want you to trade. And those things you will only be able to do. First and foremost, you need to know how to analyze the open interest. Second, you have to work very hard. Without you working, I will not be able to do. Matlab, this is not a spoon feeding, or I seriously don't do any type of spoon feeding. The day I realize that you are not working with me or you are not as vigilant as me, I will start ignoring your question. Because before you joined me, I have told this very clearly that I am a very good teacher. I know I am taking very high prices to teach you, so I want to give the premium price, so that when you are going back, you should be able to say कि भाई मजा आया मेरे को. पैसा कमाया कि नहीं कमाया, I don't know, but my knowledge, my way of thinking has changed completely. ठीक है. इसका मैं मौका पे डाउनलोड करके इसको अपडेट मार देता हूँ. I have allowed you to unmute yourself and then you can speak. Hello, sir. अभी आप देखो, या 1 जुलाई देख रहे हो, एवरीवन कैन सी. Yes. Yes or no तो आया होगा. नो म्यूट बटन्स. Now you can speak. Hello, da. दादा मैं देख रहा था कि अगर मान लीजिए कुछ जून में अपने को बैंक में 36,000 पे खुला था मान लीजिए, तब किसी ने 38,000 का अगर हेजिंग भी मान सकते हैं, लेकिन अभी तो लोगों के सामने ही कम दिख रहा है, उस पर फिर अगर 76,000 तक जा रहा है, तो आप जो कह रहे हो बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सही हो रही है, बिकॉज पीपल आर नोइंग एंड बिल्डिंग इट. अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ. देखिए आप ट्रेड प्लान समझिए, ठीक है. जब तक ये ट्रैप नहीं हो रहा है, हमको और आपको कोई मतलब नहीं है. बाहर में जाइए, इसका पैसा ये ले जाके चूल्हा में लगाए, मेरा और आपका तो कुछ जाता नहीं है. लेकिन जिस दिन ये ट्रैप हुआ, उस दिन मैं और आप गिर, बस. जब ये नुकसान खा रहा है, हमको और आपको कोई मतलब नहीं. लेकिन ये जिस दिन हमको लगा कि मार्केट रिवर्स हो रहा है और ये बेटा कमाएगा, तो हम और आप क्या करेंगे, इसे दोस्ती करेंगे. दादा इतने सारे ऑप्शंस अपना कब काम चालू होगा, जब पैसा कमाएगा तभी तो. जब इस पुट राइटर को पैसा बनेगा तभी तो अपना काम चालू होगा. चलिए लेट अस स्टार्ट द सेशन. ये सब सारा चीज तो चलता रहेगा. अभी नहीं तो 2 घंटा में इसी पे करता रहेगा. I hope everyone can see my screen. Hello, and I'm audible to everyone. Now I've taken my microphone also, so the quality of the voice will be better. I think I am mute. Yeah, you may be mute. Ask to unmute. Da. Whenever we are not talking, please mute yourself. This much I expect from you. Yeah. See how we will proceed.
See, let us start the session. It's 11:10, and if someone has not joined, then it is his responsibility not to. I think it is getting recorded also. Stop video. So the agenda is first we will do VBAC, then we will do ABBAC, then we will do straddle and zigzag, and then we will do long options. Long options. Oh, these four we need to cover in this batch. I am adding this one. This is the new topic I am adding today. Generally, I take 2.5 to 3 hours to cover this much. So this will take at least half an hour, 45 minutes. So net we are supposed to cover the session 11, 12, 1 to 2 to 3 p.m. Okay. It's the things are very easy. Just we need to revise and then we need to implement all these things. The first and foremost, what is marketing? The basic funda. Market is a place where the big fish eats the small fish. What does it mean? Basically, it means if you have the big money, then the chances of your making money is much more than the person who has less money. Example, like yesterday, who is bigger, Reliance or the government? Anyone? Who is bigger, Reliance or the government? Government. Government, very good. So what government did? Increase taxes. Government imposed Windfall tax. Result, Panic selling. price of Reliance. Right. Clear and simple. Here what happened? The big fish, government, eat the small fish, Reliance. Here. In the same way, in our market, there are two persons. Buyer of option, seller of option. Now, I want to buy, let us see. I want to buy this 33,700 call at 360. So what will be my investment? $360 into 25, correct? Yes or no? Yes. At the same time, I want Sell. to sell this call. Then what will be my investment? I think around 50,000 rupees. So who is bigger here? Buyer or seller? Seller. Of course, buyer. Now see one more. What may be the profit for a buyer and what may be the profit for a seller? Buyer, profit, unlimited, loss, limited. Seller, profit, limited, loss, unlimited. So what we are seeing, instead of the seller having the disadvantage,
he is investing the higher amount. Yes or no? Yes, दादा. Yes sir. Yes दादा. अच्छा, अभी ऐसा क्यों होता है कि जो मेरा सेलर है उसका प्रॉफिट भी लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, बट ही इज डूइंग द सेलिंग. तो क्या वो गधा है? इज इट गुड? चांसेस ऑफ सक्सेस? Yes. Are you selling? Low and buy. ठीक है, ये तो हमको आपको सबको पता है. जी दादा. We are not talking what is good for buying, or we are not talking what is bad for buying. We are not talking whether buying is good, or we are not talking whether selling is good. We are just analyzing what happens as a buyer and what happens as a seller. So the chances of success is high in buying and low in buying. Buying. The amount invested is more in selling, while the amount invested is very less in buying. The seller has a limited profit, or his maximum profit is what? The premium sold. Yes. But the buyer has a limited profit. ऐसा ही तो कुछ होता है, क्या और कुछ होता है? जी sir. क्लियर है? इसका मतलब what does it mean? The seller is the market creator. True. जब तक मार्केट में सेलर नहीं होगा, they will not really buy. हम जो भी ओपन इंटरेस्ट या जब भी मार्केट का बात करेंगे इन आवर फाइनेंस, वी विल टॉक अकॉर्डिंग टू द सेलर्स. ठीक है, अगर हम कॉल का बात कर रहे हैं या हम पुट का बात कर रहे हैं या बैंक निफ्टी का बात कर रहे हैं, वी विल ऑलवेज आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द सेलर. ठीक है, कि whether the seller of the option or the seller of the future is getting trapped on. Why we are trying to identify the trap on the seller? Because the seller has the big money. The seller is the big bad guy. Clear है? Yes. हाँ? Yes दादा. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब भी बात करेंगे मार्केट में, whenever we will be talking about the market or whenever we will drawing the evidence, correct? We will try to identify कि what is happening with the seller of the instrument. We are not trying to identify what is happening with the buyer of it. How we will react is the second part, correct? But what we analyze is what is happening with the seller of the instrument. Why we are analyzing the seller? Because the seller is the person with the big profit. ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि मुकेश अंबानी वहाँ पे क्या कर रहा है, तो आप पैसा ज़्यादा कमाओगे. या अगर आपको ये पता चलता है कि नरेश गोयल जो जेट एयरवेज का अर्चवाइल ओनर था वो क्या कर, आप बताओ दोनों में से आपका पैसा कहाँ ज़्यादा कमाएगा? रिलायंस मुकेश अंबानी का ना? मुकेश के साथ. मुकेश के साथ. तो हमको किसके साथ रहना है? मुकेश अंबानी के साथ. मुकेश अंबानी को हर धंधा में प्रॉफिट होगा ऐसा तो नहीं होता है ना, कहीं कहीं लॉस भी तो होता है. जी. ठीक है, होता है ना कहीं कहीं लॉस. जी दादा. कि ऐसा है कि वो जो भी धंधा करेगा उसमें प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता दादा, कहीं भी लॉस होता है. लेकिन व्हाट इज द सक्सेस रेशियो? ही इज विनिंग मोर देन व्हाट इज लूजिंग. करेक्ट? In the same way, the seller is supposed to be more than what he will lose. How those things are happening, we are not going into all those details. We are just doing a basic thing. We will identify every move of the market based on the seller's perspective. Clear है? Why we will go with the seller's perspective or anything else I want to explain? Clear है दादा. Clear. Let me see the chats whether it's clear है क्या नहीं. मेरा mic mute है क्या? I think everyone is. दादा ये ब्लैक पैच क्या आ रहा है? क्या? दादा स्क्रीन में ब्लैक पैच आ रहे हैं. तो दैट इज अ चैट ऑप्शन ऊपर और नीचे दोनों में आ रहा है. वो ज्यादा का टॉप राइट साइड में आ रहे हैं और सेंटर में आ रहे हैं.
नहीं मेरा में कुछ नहीं आ रहा, मैं इसके ऊपर से हाँ इधर से मेरा आपको चलता सर ये क्लिक करिए सर, चला जा रहा है, आप वहाँ पे क्लिक करिए। That would be participant list or the chat which you opened on screen. वो चैट स्क्रीन ओपन किया मैं उसका, ठीक है चलो। So this is the reason we will identify everything according to the seller's perspective. Why seller's perspective? Because the seller is the guy who has the biggest money or the biggest profit in the market, or we can call them the market maker or the market creator or the person who is dominating the market. Let me tell you one more, or let me solution to that. Today, sorry, yesterday the bank nifty closed at 53,726. ठीक है ना? जी ये ऊपर से ऊपर कितना जा सकता है भाई थर्सडे? नो जैसे आइडिया। कोई एक्सपायर हो जाएगा 38,000। हेलो, जी जी उससे ऊपर थोड़ी ना जाएगा भाई, 5,000 पॉइंट से ऊपर थोड़ी ना जाएगा। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ सेलर है, ₹2.5 का ऑप्शन भी आदमी बेच के जा रहा है। तो जी इस ₹2.5 को कमाने के लिए इसको कितना रुपया कम देना पड़ा, मतलब ₹2.5 into 20, this is he will be hardly earning 50 rupees basically, 50 or 500. But to get those 50 or 500 rupees, how much is investing? He is investing 25,000 or 50,000 rupees as maybe the margin. These may be some hedges also, but basically what we are talking, भाई कोई ना कोई बेच रहा है तभी तो कोई खरीद पा रहा है। सपोज यू आर बाइंग अ हेज, ठीक है, आपने ₹2.5 वाला एक ऑप्शन बाई किया, आपका वो ऑप्शन बाई कर सकते हो। जब कोई सेल करेगा तभी तो आप बाई करोगे, जी कि बिना सेल किए भी आप बाई कर लोगे? ऐसा होता है क्या कि देयर विल बी अ बायर बट देयर विल नॉट बी अ सेलर? फॉर एवरीथिंग दैट यू आर बाइंग देयर इज ऑलवेज अ सेलर, and the seller is the guy who is investing the capital. You are buying this 2.50 priced option knowing very well that it will become zero, and he is selling that 2.50 rupees priced option knowing very well that he will not earn more than 2.50 on this option. अब आप दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है तो जी दादा। So what we will do, we will analyze the market as per the seller's perspective. ये हमारा सबसे पहला फंडा about the market. Clear? Now let us come to VWAP. What is VWAP? VWAP is basically Lakshman Rekha for intraday trading. Any instrument above VWAP is bullish. Any instrument below VWAP is bearish. ये सबको पता है? जी This is known to all. So what we will do, we will never trade against the VWAP. VWAP comes from exchange and we cannot change it. It's populated on your watch list as ATP/VWAP. It remains same for everyone trading, whether Mr. RJ or you or I. Whatever we are seeing the VWAP will remain the same for you, me, and everyone. What happens? VWAP is basically volume weighted average price. If you don't know about VWAP, then you are supposed to go on the link that I sent you yesterday and just read it. Any instrument which is above VWAP is bullish, and any instrument which is below VWAP is bearish. We will never trade anything against the VWAP. This is our the most basic and the golden rule. Suppose if I am telling any trade to do, the moment it is going below VWAP, it means you are supposed to exit.
अपने को ये नहीं देखना है कि भाई ये मेरा चेक होगा या वापस इट विल गो बिलो विवर एंड देन इट विल रिवर्स और इट विल डू फल्ला और इट विल डू दुखला. Those things we will not do. Plain and simple, we know one thing: if any instrument is going against the VWAP, our trade is going against the VWAP, we will get out of that trade. If required, we will again enter into it. But I will book my loss the moment the thing is going against the VWAP. इस चीज को आप ट्रेडिंग में अगर नहीं भूलें तो आपका जो सक्सेस रेशियो है इट विल इंप्रूव एटलीस्ट बाय 20%. The moment anything is breaking VWAP, just exit the trade. अभी आप सपोज कीजिए the VWAP is 120. You had kept a stop loss of 180. It is perfectly fine. कि आपका 120 VWAP है, आपने 2 पॉइंट नीचे उसने फिर स्टॉप लॉस बना के रखा हुआ है. It's okay. But VWAP is 120 and you are keeping a stop loss at 100 or 95 or 110. This is not acceptable. Plus minus 1% or 2%. Below the VWAP is perfectly fine. But if you are going more than 3, 4, 5% below the VWAP, then it is not fine. If you are doing some hedging or some non-directional strategies, then it is a different factor. I don't do non-directional. We talk about directional, how to play the direction in the market. So we'll talk about directional only. In directional trade, we are not supposed to trade against VWAP. Suppose the VWAP is 120, your stop loss can be 180, perfectly fine, plus minus 1%. But if the VWAP is 120, your stop loss cannot be 108. It cannot be 110. Just cannot do. It may happen sometime that your stop loss is hit, and then again the instrument goes above the VWAP. I am perfectly fine with this, but I will not trade against it. Clear? Yes, sir. Clear? Yes, Dada. Do you want me to show the example? Sure, sir. You can share one. One, I will show what happened yesterday in the Nifty. Yes, Dada. What traded Nifty yesterday? Nifty. Yeah, Nifty. It opened lower and then went. It was hugely bearish. Sir, I shorted below 650. I am not asking what you traded. I am just asking you what happened with the Nifty yesterday. Yes. See, this is the 15,700 call of Nifty Yes. on 1 minute time frame. Correct? This yellow line is the VWAP line. It will be better if I open it at 0. See, yesterday, 1st July, opened around 160. This red line is the VWAP line, correct? Yes. Made a low of 100. Then here, touched VWAP, reversed, 110. Here, 130 touched VWAP, reversed, 117. Here, a small reversal, then here, 140. Sorry, 130. 200. We will never trade against this red line. Correct? If you are trading against the VWAP, then what will happen? Whether you will short here, because yesterday everyone was feeling that the market is very bearish. It is very bearish because Reliance closed almost at a day's low, 1 or 2% above the day's low. Still, Nifty closed at the day's high. You can see what happened when you will trade against the VWAP. In the same way, suppose you bought 52,800 put. Above VWAP, broke VWAP, you are still holding the trade. See where it is ending. Even if you have entered here around 275, it is closing 100 rupees below your cost price.
So our thumb rule is that we will not trade ever against B. यहाँ पे आप बोल सकते हो दादा हमारा स्टॉप लॉस ले गया, इट इज परफेक्टली फाइन भाई, कितना ले गया 10 पॉइंट ले गया, 2 बार ले गया 20 पॉइंट्स ले गया, यही तो होगा. इन 2 ट्रेड्स यू विल मिस 20 पॉइंट्स, बट यू विल नॉट एंड अप विद 100 मोर लॉस. ठीक है. हेलो जी दादा. यस सर. This is one example, and this is the perfect example. See what happens when you trade with VWAP. See here, since morning, Bank Nifty put were trading below VWAP. Only once went above it in this zone. Can you see this? Yes. Yes. And then, boom, I traded in this put, 33,000. I sorted somewhere around here, around 380 with a stop loss of 407 was the high. My stop loss was 4110, and I exited exactly here, around 160. Just imagine what was my stop loss, 30 points. From 380, I exited at 160. Just based on this single line. Except here, I was never challenged. Clear है? जी दादा. Yes sir. So we will never trade against this thing, or we will never trade against VWAP. This VWAP or this ATP, it's on your this ATP, average price. Correct? Yes. This is on zero. Any indicator, any broker terminal you are using in your watch list, there is always a ATP. If you have not selected the column, please select it. You are not supposed to buy any instrument which is trading below ATP, and you are not supposed to sell any instrument which is trading above ATP. Correct? Yes दादा. We are supposed to follow 2 ATP. One is of the Bank Nifty. If the Bank Nifty is above the gap, then it is basically bullish for us. How we will trade, it comes later. But it is basically bullish for us till it breaks the VWAP. And if the Bank Nifty is below VWAP, it is basically bearish for the day. इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए. ठीक है. जी दादा. क्लियर है. यस दादा. हमने क्या बात किया दादा? हमने बात किया मार्केट क्रिएटर का, हमने बात किया लीडर. ठीक है. अभी है इसमें आप लोग ने देखा होगा जो वी वैप होता है, ये जो एटीपी आपको जीरो का जो दे रहा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते. व्हाटएवर द एटीपी दैट इज कमिंग, और ये एटीपी जो आपको जीरोडा में दिखेगा वही आपको कोलैक्स सिक्योरिटीज में दिखेगा, वही एडवाइस में दिखेगा, वही केएफ में दिखेगा. सो व्हाट एटीपी यू आर सीइंग will be same for me, you, Rakesh Damani, Rakesh Gujranwala, Mitesh Patel, Asif Barampati, everyone. तो अभी इसमें मेरा एज कहाँ है? आप बताओ कोई भी ऐसा चीज जो मैं देख पा रहा हूँ, जो आप देख पा रहे हो, जो पूरा दुनिया देख पा रहा है, उसमें कोई एज होता है क्या? नो नो. उसमें कोई एज नहीं होता है. तो मेरा और आपका एज क्या है? मेरा और आपका एज है एंकर या एवी. अब व्हाट इज एवी वैप बेसिकली? एवी वैप मींस एंकर्ड वी वैप फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट. ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी आप ये बताओ, रिलायंस का कल वाला जो न्यूज, आपने कितना बार देखा है लाइफ में कि रिलायंस आपसे रेफरेंस मांगी दुनिया लाइफ में? कल सर फर्स्ट टाइम देखा. और आपने फर्स्ट टाइम कितना दिन से आप ट्रेडिंग कर रहे हो? सर 1.5 ईयर. 1.5 साल में यानी ऑलमोस्ट 300 सेशंस. जी दादा. In 300 sessions, you are seeing Reliance is down 8% or 7% for first time. तो ये एक important day हो गया Reliance के लिए. जी. ठीक है. In the same way, हमने और आपने देखा था कि HDFC बैंक का एक merger न्यूज है. जी दादा. HDFC बैंक 10 या 12% जी था ना. जी जी दादा. HDFC बैंक का merger with HDFC आपको कितना बार देखा है?
एक बार एक ही बार मैंने एक बार ली। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि नहीं होता? ट्रू। हाँ, बजट, इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट होता है डेली आता है क्या? No. कितना बार आता है साल में? Once a year. Once a year. So we can say that it is an important reference point. Yeah. RBI policies. Yes. RBI policies happens for We four got it. times in a year. I have got it. Yes. So it is an important reference point. Yes. Correct. Weekly expiry happens once in 5 days. Yes. So the high and the low of a week can be important reference point. Yes. Yes. Correct. Yes. So what I am trying to find is that what is the important candle or the bar of a particular instrument, whether it is the battery, whether it's the options, which options is all of it, or whether it is a stock futures. I am trying to create an average that a person who has bought or who has sold the instrument on that day. अभी आप देखो जब कल आपको रिलायंस में जो ट्रेडिंग, I am going to trading view. ये इतना बड़ा कैंडल आपने कितना बार देखा लाइफ में रिलायंस में? मैं फर्स्ट टाइम देखा। आपने फर्स्ट टाइम। 54। ये जो कैंडल है इसका पता आपको याद है? नो सर। ये फेसबुक का जो डील अनाउंस हुआ ना करोड़ का, ये उस दिन का कैंडल है रिलायंस 20% from 19 कोविड का डील अनाउंस हुआ था, इसीलिए अनाउंस हुआ ना, इससे पहले अनाउंस हुआ आज ये है ना अपना लो टैक्स 21 यही के आगे शायद अनाउंस हुआ अगस्त में। सॉरी यहाँ पे कर सॉरी ये वाला कैंडल 31 में है। अगर हम यहाँ से एक तो कैंडल का एरिया बनाते हैं रिलायंस का एंड जस्ट टचिंग, तो दिस कैन शो मी कि रिलायंस का यहाँ पर जिसने भी इंस्ट्रूमेंट सेल किया था रिलायंस उसके ऊपर चल रहा है जी। मींस हु इज एंजॉयिंग द मनी, द सेलर और द बायर? बायर। Seller. बायर। अगर यहाँ पे इसने बेचा और इसके ऊपर है रिलायंस, तो सेलर कैसे होगा भाई? Buyer. बायर। आप देखो कितना बार रिलायंस इस कैंडल के नीचे आया फॉर द डे, वन डे। आई थिंक दिस इज something some news or some split का होगा शायद। During the day it came and gone up one day, hardly from here, मतलब from 28 May 21 till here July 22, it's almost 300 sessions. It hardly closed below this line for the 5 to 10 days. दिख रहा है ना हमको आपको? जी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जिसने भी इस ऑप्शन को बाई करना चालू किया था रिलायंस का स्टॉक को, he is always making. But what will happen if it stays below this person will also start to lose money because ये line जो है, this line is taking care of all the volume and all the prices taken together. मतलब this line is basically the average volume weighted average price line of Reliance traded from this point, this reference point. ठीक है? हेलो जी दादा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दादा यहाँ पे रिलायंस अभी स्टार्टेड एट 2100 but suppose this is trading at 2400 and this Reliance is below this line, तो ये तो 2100 है, तो 2400 वालों को कैसे नुकसान होगा? You will not think like this because what this line is doing this price into volume, this price into volume, this price into volume, this price into volume, this every price into the volume pattern that is created in the candle. So this is the average. Anchored VWAP means anchored volume weighted average price.
and we are doing anchoring from this point. ठीक है? जी दादा. दादा ये क्लियर हो रहा है ना? This is the concept of MVF which we are discussing. Yes sir. So what I will do if I am a positional trader in Reliance, I will just draw one more MVF from here. ये हो गया मेरा यहाँ पर. What this anchoring is giving me 2453. यहाँ पे अब ये सेम कैंडल है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है. This is the black candle. 2453 इसका प्राइस है. If Reliance stays below this 2453, means the seller of this candle are making it. Plain or simple. If Reliance starts to trade above this 2453, तब आप समझ लेना ये जो सेलिंग हुआ था ना, this has been taken care of. Okay. ठीक है? जी दादा. अभी इसी में सपोज करो रिलायंस इस लाइन के भी नीचे चले, तब हमको क्या पता चलता है कि दादा ये रिलायंस का तो अवस्था बहुत खराब है. यहाँ से जिस आदमी ने लॉन्ग ऑप्शन मतलब लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया था फ्यूचर्स में, दे आर लूजिंग मनी एंड द सेलर ऑफ दिस पोजीशंस आर गेटिंग द गेन. अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि हाउ दिस. दादा वो प्रॉफिट बुक करके नहीं जाएगा, वो एवरेज करता रहेगा. वो हमको नहीं सोचना है. वो प्रॉफिट बुक किया कि कैरी ऑन किया वो मेरे को नहीं पता. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आइडेंटिफाइंग द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेफरेंस. ओके. प्रॉफिट किया लॉस किया वो उसका काम है. मेरे को रात को क्या देखना है कि भाई उसका क्रियाकलाप क्या होगा. जी. अपना एचडीएफसी बैंक का अपना एचडीएफसी का कब आया था न्यूज मर्जर का? दिस वाज द कैंडल. ये कैंडल था. देखिए बिग गैप अप है ना जी. आप देखो इसके बाद ये कभी भी प्राइस इसके ऊपर बंद हुआ एनी सिंगल डे? नेवर. सो वी कैन से दैट कि यहाँ से जिसने भी माल खरीदा इज इन पे. दिख रहा है क्लियर? जी. व्हाट वाज द गेम? यस. अभी आप देखो 2 बार 3 बार यहाँ पे पहुंचा एचडीएफसी एंड देन व्हाट हैपेंड? It got sold into. We went here, ना? Yeah. But we got sold into. ये जो कैंडल है ना दादा ये फेक कैंडल है. These are created at the pit. ये सब इग्नोर कर दीजिए. Here we just tried to cross this candle, this black line, but we got sold into. अभी अगर बैंक निफ्टी में वो जो 39,000 का जो बात कर रहे हैं अगर उसको होना है तो एचडीएफसी बैंक need to cross this 1390. अगर एचडीएफसी बैंक 1390 जोन क्रॉस कर लिया तो आप समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी का 39,000 का पुट सेलर इज इन द गेम. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? दिस स्टार्टेड फ्रॉम 4th of April 2020 एंड व्हेनेवर इट विल हैपन आफ्टर 1st July 2022. इतना तो पता ही है कल से ही होगा, आज से कोई नहीं रुकता है जी. तो अप्रैल मई जून जुलाई 3.5 से 4 महीना का पेन जो था, ये जो पूरा सेलिंग है, this selling has been observed. This selling completely diluted or taken care by the system, and now the HDFC Bank will be very, very, very bullish. Not bullish, it will be very, very, very bullish. And when HDFC Bank runs, then we all know what happens to bank. Okay? Yeah. This is the importance of this line. उसने यहाँ प्रॉफिट बुक किया कि यहाँ प्रॉफिट बुक किया कि यहाँ प्रॉफिट बुक किया, दादा उससे मेरे को कोई मतलब. What I'm trying to identify is what is my anchored volume weighted average price, and this plain line is telling me what is my anchored volume weighted average selling price. See अभी आपको यहाँ पर इसमें दिख रहा है 1388. If I go and try to see in this जीरोडा, तो अभी आप देखिए जीरोडा के साथ प्रॉब्लम क्या होता है. यहाँ पे आपको सिर्फ जुलाई फ्यूचर्स में, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या फ्यूचर है, दिस इज माय कंटीन्यूअस फ्यूचर. ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि द वॉल्यूम जो वॉल्यूम मेरे को मिल रहा है यहाँ पर और जो यहाँ पे मिल रहा है उसमें थोड़े डिफरेंसेस है. तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा इसका शायद कंटिन्यूअस फ्यूचर भी होता है, इसमें कोई सेटिंग है जिससे आप कंटिन्यूअस फ्यूचर कर सकते हैं. देखने के लिए आप लोग देख लीजिएगा कहाँ होता है. सर वो व्यू में आता है शायद. व्यू में आता है क्या? डिस्प्ले या व्यू में, डिस्प्ले या व्यू में आता है, नीचे आता है शायद. सबसे नीचे आप जाओ तो आ जाएगा. तो नीचे सबसे नीचे से इसको ले जाओ कर्सर को, शायद आता है वहाँ पे.
कंटिन्यूस डाटा ये सर कंटिन्यूस डाटा। जी कब का था वो? डेली में जी यहाँ से था सर। जिस दिन रैप अप हुआ था बहुत बड़ा मैं इसको इतना यूज नहीं करता हूँ, इसको दिक्कत पूरा सर। यहाँ से था ना जी 4th अप्रैल स्टडीज। देखिए आप जब वीवैब लिखेंगे तो आपका एनकार्ड और वीवैब दोनों का दिख जाता है। तो यहाँ पे लिखना होगा 4th अप्रैल 22 9:50। इसका आपका ये लाइन आ रहा है 1377 के आसपास। इसमें लाइन आ रहा है 1388 के आसपास। इफ यू आर फॉलोइंग Tiroda, you follow 1377. I am following this trading view. I will follow this 13. अभी आप बोलो दादा ये 1388 और 1376 का डिफरेंस समझाइए। I will not be able to explain practically क्योंकि ये क्या फॉर्मूला यूज कर रहा है I don't know. ये क्या फॉर्मूला यूज कर रहा है I don't know. I just use the default settings. This is my default settings. I will just post in the that's great. It might be due to this intentional candles on Zeroda. anything that I actually am not competent enough to comment on all those slides, yeah, all those things. Abhi just see what happened to HDFC also. See the same from 4th of April. अब देख रहे हैं यहाँ this line is protecting. हमने बैंक में भी देखा यहाँ से रिवर्सल आ गया, देखा था ना जी इसमें भी हमको यहाँ से रिवर्सल आ गया. This cannot be coincidence. मैं आपको ये बता देता हूँ, this cannot be coincidence. Again, when this you will see that Bank Nifty or HDFC is approaching this level. You will see the vibration. You will see the vibration in option data. You will see the vibration in the stock prices. And if this closes above this for a day, then you can take a very beautiful trade with the this low and the stop. Because what will happen here? Suppose it is closing at 2300 or 2310. What is your stop loss? Your stop loss is just below this line. It's 2285. But what will be your target? The target can be 2400, 2500, 2600, anything. Your stop loss is very small. Here the target, why I am telling you the target can be anything? Because this is starting from 2700 to 2100, there's a downfall of almost 600 points. yes After suffering 600 points, it is coming back by 150 points or 200 points. So still at least 400 points is okay. And if you are playing this to call or put, you can make a lot of money. ठीक है? जी So this is the importance of this line. अभी आप बोलोगे कि दादा इस कैंडल की जगह हम इस कैंडल से ड्रॉ करेंगे, then I will ask you why this time. कोई तो रीजन होना चाहिए why. इस कैंडल का मेरे पास एक सिग्निफिकेंस है. This is not the price which is the significance. The news is the significance. And what we are trying to see, we are trying to follow what happened when the price acted on the basis of the news. Correct? जी अभी आप देखो यहाँ पर this is 2780. yes ठीक है? This is also 2700. But this 2780 is not important for me. Why? Because this is a natural price. This is a natural stock price which has gone up or gone down. But this 2700 is very important because this is the price which was created based on the news. दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया? जी सर कि देखिए यहाँ पे भी 2700 है, यहाँ पे भी 2700 है. But what is the difference between both the 27? न्यूज़ में News. And this news happens daily. once in a while Once in a while, once in a blue moon. Or Yeah. this news can change the performance of the stock or the market. Clear? yes sir
एंकरिंग समझ में आया दादा? जी दादा, क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल। चलिए एक बार देख लेते हैं किसी का कोई क्वेश्चन आया है क्या? 99 यस 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 अनम्यूट तो कीजिए डिस्प्ले व्हाट पॉइंट प्लीज अनम्यूट अगस्त कैंडल I explained it what is the difference between both the 27. Don't go for August, July, April, June, July, yeah. Just unmuted anyone was raised. दादा आवाज नहीं आ रहा you need to speak a bit louder. सर अब आवाज आ रहा है? थोड़ा सा होता है एकदम सर अब आ रहा है आवाज? नहीं मेरा माइक्रोफोन एक सेकंड दादा एक मिनट मेरे यहाँ For everyone, so your voice is not clear. मेरा तो दादा वॉइस सही है। ये ना आपका ठीक है, उनके माइक्रोफोन का प्रॉब्लम नहीं अभी बोलिए मेरा भी वॉइस खराब नहीं था। अभी बोलिए दादा अभी आप हाँ जी सर अब आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रही सर किसी बात से कल जो रिलायंस का कैंडल बन रहा है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इतना देर तो यही तो बात किया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट रिलायंस कैंडल अपने उसका फेसबुक वाला डे का भी अपनी बात की आपको पे बात की दादा ट्रेनिंग सेशन में कि इधर उधर घूम रहे थे चाय वाय पीने थे सेशन नहीं मिस कीजिए इसी हिसाब से दादा अपना रिलायंस का जो कैंडल है ओके ठीक है वाई एच दादा मैं जितना भी मैं सबको मैंने अनम्यूट कर दिया तो कौन बचा है हेलो हाँ तो बोलिए मैं जस्ट टेस्ट कर रहा था टेस्ट हो गया ना तो I just unmuted everyone. Anyone else who want to understand what is AUF and basically what is algorithm? No. I'm just trying to give you a perfect example. Okay. Another HDFC bank should be the. We seen both the things. We have seen first we seen the HDFC bank, then we move to HDFC. और वो एंकर मैप में अगर 1% का डेटा हो वो वेरिएशन तो चल जाएगा ना अभी अपने उस पे बात नहीं कर रहे थे we are just talking about what is anchor क्योंकि दोनों में अलग अलग है कि 137 में नहीं मैंने कहा ना नहीं if you are following zero ठीक है okay then you have to follow zero I am following trading you I have to follow zero because see what is happening after 1 month I will not be able to tell you what is my trading you prices so you have to follow your system and I have to follow my system both the things are correct I am not telling you whether zero is more correct or whether this trading view is more correct. It may happen that my trading view data is wrong. Your 1379 is correct. So you are getting early entry at 1379. I will be getting a delayed entry at 138. Whatever may be your entry or my entry, it will always come with a defined stop loss. Then below the line you are supposed to exit, and below the line I am also supposed to exit. Correct? Got my point? जी दादा Yes, very clear. We can go ahead. दादा एक क्वेश्चन है बोलिए जो आपने न्यूज़ का बोला तो जैसे किसी कंपनी का रिजल्ट आता है yes very important बट क्या होता है कभी-कभी रिजल्ट से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता प्राइस तो स्टिल दैट मैटर्स और प्राइस मूवमेंट भी होना चाहिए रिजल्ट वाले डे पे जरा अभी आप ये सपोज करो इन्फोसिस का रिजल्ट फाइनली अभी जो आएगा नेक्स्ट महीना अभी आएगा ना शायद 24 तारीख को शायद संडे को एक नेक्स्ट डे इन्फोसिस खुला इट क्लोज एट 1% प्लस माइनस ठीक है इसी के साथ साथ एक रिजल्ट आया एंड इन्फोसिस इज क्लोजिंग 10% व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट एट 1% प्लस माइनस और 10% अप 10% तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट रिजल्ट हैज मूव्ड द प्राइस so that candle will become important plus minus 1% is a daily affair yeah okay that plus minus 1% is a daily affair अभी आप सपोज करो क्लोज हुआ plus minus 1% लेकिन वो एक तो बार बना लिया इंट्राडे का 15% का और which is the actual 15% move which is not a fake move which happened at open or close during the day it moved up 10% and then it fall
After 2 At the p.m. same it point. will fall. Means you are getting a proper candle. Then that candle becomes important. That it is closing plus minus 1%. But movements are there. But the news has moved the price. What we are looking for is जो न्यूज है, न्यूज के कारण प्राइस में मूवमेंट है, ठीक है? Difference plus minus 1% and plus minus 1%. Both the cases plus minus 1%, but one is a natural plus minus 1% stock move in the जो which happens on a daily basis. But here before ending at plus minus 1%, it gave a move of 10 to 15% during the day. दादा आप डेली ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन अभी आप चुप रहिए. So can we consider gap up, gap up or gap down? एक सेकंड दादा जी. दादा एक किसी का वॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, नहीं तो अपने अच्छे से नहीं से सकते. चलिए. So can we just एक सेकंड. ये चेतन जी, I am muting you and I will remove you. If you continue like this. बोलो. so gap up or gap down, maybe can we just use this? No, not the normal gap up or gap down. Okay, The that is gap up what or gap down is happening because of something. Okay. अभी आप अपना कल क्या हुआ, डिफिकल्ट रिलायंस में क्या हुआ, ठीक है? The news just flash at 9:50. Yes. अपने लेटेस्ट सीधा चार्ट हो. देखिए we are taking a bit longer, but we need to be clear on this. मैं 1 घंटा का आप लोग को पहले अच्छा लगा, मैं आपको टाइम लेती हूँ. This is very informational because what we learned earlier for AV gap, that is just identify a higher point or a lower point. From there you can just draw this AV gap. But this is like reference of a news or something big अभी आप movement. देखो कल रिलायंस में क्या हुआ, it closed day before yesterday at 2586. Yesterday it opened at 2571, a downtick of 14 points, 15%. It went till 2588, which almost flat, Yes. and then it started falling. From 2588 it went to 2374. Now why this is happening? The news was flashed almost at 9:50. First, what happened? The news was flashed that the government has increased the excise duty on petrol and diesel by this much and 88. उसके बाद न्यूज आया कि the increase will be only for exported है. ठीक है, पहले तो मार्केट में ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी विड्रॉ किया था मतलब महीना और पहले, दे हैव रोल्ड बैक. फिर 2 या 3 मिनट बाद आया कि नो, इट इज नॉट ऑन द नॉर्मल थिंग, इट इज ऑन द ओनली द एक्सपोर्टेड है. फिर जब मार्केट को समझ में आया कि कौन कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, किस किस को एक्सपोर्ट करके पैसा का कमाई है, एंड हु इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इन द एक्सपोर्ट, रिलायंस. देन इट स्टार्टेड फॉलोइंग. करेक्ट? आपको समझ में आया कि हाउ द न्यूज़ प्लेड हैवॉक and why this becomes important. Here what you can do, suppose if you are a 1 minute or 2 minute, you are taking this on a 1 minute time frame on an intraday basis, then you can draw one anchored viewer from zero to the news, because this is a very important low. अभी आप देखो इस लो के साथ में क्या कांड हो रहा है. Whenever it is time to go here, do. Okay. But here the anchored viewer which you have drawn from the morning is never. Right. This is never crossed. अरे भाई बार-बार आके यही पे क्यों रिवर्स, बार-बार आके मार्केट यही पे क्यों रिवर्स करता है? कुछ तो रीजन होना चाहिए. We just cannot say it is a coincidence. Correct? अभी आप देखो. But see, you are मतलब I will tell you, if you are a मतलब Indian market player, don't try to play bearish on this. Okay? So what we will do, suppose if you want to देखो तो ट्रेडिंग करना, ये रिलायंस मेरा एंकर्ड वीवर जो भी मैं इससे ड्रॉ होगा, ये तो एक डे का कैंडल है, एटलीस्ट इट विल टेक 1 or 2 days to identify whether the volume of this candle, the volume of this day is making money on the buy side or on the sell side. If it is making money on the sell side, then why to long term, not short term or the short term. This is my request to you, and best what you will do is slow. If you want to play a bearish on Reliance, always play to long term.
Because when you are doing through long put, the maximum loss is always 10. But if you are playing through this short calls or the short futures, किसी भी दिन ये न्यूज उल्टा होता है, कोई भी क्लैरिफिकेशन आ सकता है, कोई भी मॉडिफिकेशन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना. सो व्हाई विल ट्राई टू प्ले इसमें. होता है ना भाई, आपको पैसा बनाना है, लेकिन पैसा कैसे बनाना, मर्डर करके थोड़ी ना. आप मर्डर करोगे तो आपको 5 लाख रुपये मिल जाएगा, और वो अपना इंडिया में 2-3 महीना का सैलरी हो, आपके से अच्छी जॉब में, तो आप एक मर्डर करो 5 लाख रुपये मिलेगा, तो आप उससे थोड़ी ना पैसा बनाओ. So you just need to identify how you will make money. So if you want to make a money in bearish position, the stock is bearish, the setup is bearish, okay, we'll go bearish. But how will go bearish? We'll go bearish to long term. Because here what happens, my loss is always negative. Because what I am doing basically, if I am shorting Reliance, I am shorting 70% of the equity. Agree करोगे तो आप मेरा बात इससे? Yes, sir. Yes, sir. So this is the basic point. We can play, but we will play to a defined strategy where my losses always can. Okay. अभी हम लोग वापस आते रहते हैं. We took around 1 year to explain the basic. But I hope अभी तक मैंने जितना भी बैच लिया उसमें ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है. Yes, I will say that this is the best explanation which I have given till now. What we have seen the HDFC, we have seen the HDFC Bank. Fortunately, Reliance happened yesterday. We have talked about that one also. So, what is anchoring is crystal clear with this. Okay? Yes. Now in Bank Nifty, there are futures. And futures are always monthly. क्या और कुछ भी होता है? Bank Nifty का futures Monthly होता है. options Weekly. weekly and monthly. Weekly और monthly दोनों होता है. Both. हाँ. Yes. Weekly option भी होता है, monthly भी होता है. And what we play? Weekly. ठीक है? या मंथली प्ले करते हैं क्या? नहीं. Weekly. वीकली मंथली. तो अभी आप ये बताओ, जस्ट वीकली ऑप्शन. हम बोल सकते हैं कि वेडनेसडे सेकेंड हाफ से इसमें वॉल्यूम आ जाता है. देखिए ऑप्शन का थर्सडे एक्सपायरी होता है, लेकिन आप वेडनेसडे सेकेंड हाफ में आप जाके देखोगे तो नेक्स्ट वीक ऑप्शन में धीरे धीरे करके वॉल्यूम आना चालू हो जाता है ना. सॉरी नॉट वेडनेसडे. Thursday second half, we can call it as a 5% only. Then on Friday, full day वो तो weekly हो गया. Yes. We can call this a 35% volume, and then from Monday, the full volume. या basically 100% characteristic of जो होता है ना Bank Nifty volumes का, ये basically आप बोल सकते हो ये basic फंडा है. Thursday second half में आप देखोगे कि जो round number strikes है, what you will see the round number strikes. What is the round number strikes? 33,500, 33,000, 34,000, 34,500, like this. In this call and put, you will see some volumes started to happen on Thursday. Then on Friday, you will see the volume has increased across the strikes. But here also, on Friday, you will see the round number is dominating the volumes. Let me show you the example. This is of yesterday, correct? See, this 34,000. What is the volume? The OI is 15 lakhs, the volume is 2.61 crores something, and here 75 lakhs. Here again 33,500, 4.41. See what you are getting. You are always getting the volumes in this round numbers, but here we are getting small volumes. Okay? If you will go and see of the 7th July, the volume on Thursday, this was 81 lakhs, the round numbers. And this 33,200, 7 lakhs, 1 lakh, correct? So this is clear, 535. And on Monday you will see volume across the exchanges, across the ITM, OTM. There will be a lot of volume where the slippage will be very low. Okay? So this is the reason I always say, or you will see me saying that on Friday the OI will not work. Why on Friday OI will not work? Because the volumes are good. The volumes are not happening across the stocks. If the seller are not
present across the strikes that we will not be able to identify what the seller is doing basically. They are hiding basically. Correct? अभी आप suppose करो मैं कलकत्ता में बैठ के एक रूम में बंद होकर आपसे बात कर, ठीक है? आपने देखा होगा मैंने येलो कलर का ऊपर में टी शर्ट पहन के देखा था ना शुरू में. अभी हो सकता है वो टी शर्ट मैंने खोल दिया हो या चेंज कर लिया. आपको दिख रहा है वो? नो. क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज माई वीडियो इज ऑन. इसीलिए तो अभी आपने सपोज करो ये एक ऑफलाइन सेशन है तो आपको मेरा टी शर्ट भी दिखता है, मेरा पैंट भी दिखता है, जूता भी दिखता है, एवरीथिंग यू वुड हैव सीन. बिकॉज आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग. राइट नाउ आई कैन हाइड एनीथिंग. So on Friday those hidings are happening. So it becomes difficult to identify the movement of option based on open interest. एक ये रीजन होता है. और दूसरा क्या रीजन होता है कि the prices of options are very high on Friday. So what happens? A seller gets lot of bandwidth to adjust his position because he has Monday, Tuesday, Wednesday. फिर Thursday को जाके एक्सपायरी हो. 4 दिन का ऑप्शन मिल रहा है ना उसको अपने आप को बचाने का. So on Friday, as a rule, we play very low, like 5% or 10% of our normal play. We start building our trading from Monday onwards. We go full way Tuesday, Wednesday. Then on Thursday also we decrease the volume. Why we decrease the volume? Because on Thursday the chances of we getting trapped on both the sides are very high, which we have seen in the last two experiments. Whether you have bought a call put or you have sold a call, in last two expiries you have lost it. What? Yes, yes. So आपका जो ट्रेडिंग जर्नी होगा आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को किस दिन कैसे ट्रेड होगा. आपको पता नहीं है आप फ्राइडे को बड़ा बड़ा ऑप्शन सेल कर रहे हो, भाई वो जीरो नहीं होगा ना. फ्राइडे को एक लिमिट तक ही तो मेल्ट होगा, उसके बाद तो मेल्टिंग नहीं होता है. वो मेल्टिंग क्यों नहीं होता? बिकॉज द ऑप्शन नीड टू एक्सपायर leave for next 4 days also, whether at 1 rupee or 2 rupee or 4 rupees. On Thursday only it will become zero. ठीक है? हेलो भाई टेस्टिंग. जी सर. अभी तक आपने कितना बात की है? 1 घंटा में ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड फॉर व्हाट वी हैव टॉक. चलिए एक तो समरी फटाफट. We talk about the trend identified based on sellers because they have put a lot of money in the market. Second, we just talk about the VWAP. Like if the price is above VWAP, never just sell or take short positions. Same way, like if that is price is lower VWAP, not take a long position. Then we just discuss about this AVWAP. So that is a reference point from where we can just identify what with the weaker players are going to do. So the last one, that is the weekly options we are discussing, like the days from where we can just see the data, like volumes as increased. Hello. Anyone else who would like to say, or anyone having any issues on whatever we have discussed till now? We have discussed a very basic thing, but in a very detailed way. And another point is to keep track of the news. So if any updated news comes, we can start using AVWAP on the charts. Yeah, our horizon of trading is very small. Correct? So we will be on a very advantageous position because we are not supposed to see what Reliance is doing or what SDFC is doing. We will track only 5 to 6 stocks and we will track only. Okay. Anyone asked to unmute? I have unmuted everyone. Unmute all का भी बटन होगा सर या नहीं? Yeah, unmute only. Actually, Wiki के through होता है ना इसमें unmute only. Lata, when we mute once, na, after that we can't unmute ourselves. That's the problem. I have unmuted everyone. दादा आपने जो एचडीएफसी का एग्जांपल दिया, जो आंसर दिया ऊपर से आप डाले, तो आप बोल रहे हैं कि
हमको अगर पोजीशन लेना है तो उसको ऊपर ही लेना है ना, उससे पहले भी अगर अच्छा भाई कैंडल भाई दिखे। भाई भाई अच्छा बुरा कैंडल का अपने हम बात नहीं कर रहे, अपने बात कर रहे हैं कि वहां से जो सेलिंग चालू हुआ, ठीक है, उसका क्या स्टेटस है, वहां से जो पोजीशन बना हुआ है उन लोग को प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। अगर वो कैंडल उसके ऊपर चला जाता है उस लाइन के ऊपर, इट मींस एनीवन हु हैज सोल्ड फ्रॉम 2700 will start losing money, then HDFC becomes very bullish। अभी बाकी आपको पोजिशनल अगर HDFC बाई करना है अपना रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए, तो वो सब तो अपने कभी बाई करते रहते हैं। वो रिलायंस का भी कल बहुत सारा बाइंग हुआ होगा ना। सर फ्राइडे जो वो ब्लैक फ्राइडे काइंड ऑफ मूव आता है, उसको वो क्या ट्रैप करने के लिए है या फिर वॉल्यूम क्रिएशन होता है? दादा देखिए कौन सा मूव किस लिया था वो मेरे को आपको नहीं पता, ठीक है। राइट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग वीवर, वी आर डिस्कसिंग एंकर वीवर एंड व्हाई एंकर वीवर, बस अभी उसके आगे कुछ नहीं। Hello, Yeah. Janaab. या वन बैक Hello. या एक्चुअली Yeah. Dada, VWAP SL should be one should wait for like a 1 minute, 2 minute candle to close. Yeah. I told you the prices. If you see, if you are trading Bank Nifty, 1 minute is very good. Bank Nifty nowadays, Bank Nifty moves on 100 points in a minute. And if you are trading any options, basically we will always trade ATM or ITM. We will not go to OTMs. So if Bank Nifty is moving 100 points, the ITM will move 60 points. Right. And if you are trading 1000 quantities and you are missing the VWAP by 30 or 40 points, you are gone with 40,000. Hello. Yeah. दादा, I'm audible. Yeah, you are good. मेरा छोटा सा सवाल था कि 2-3 महीने पहले जैसे फैड का न्यूज आ गया, फिर उसके बाद एक ओपेक का कुछ हो गया, क्रूड में कुछ हो गया, तो न्यूज तो लगातार फ्लो हो गया, लगातार 2-3 दिन तक न्यूज फ्लो हुआ, एक मिनट सर 2-3 दिन फ्लो हुआ, तो मार्केट ने रिएक्ट किया, तो पहले दिन वो पूरा ग्रीन कैंडल बन गया, तो फॉल सेलर को फायदा हो गया, एक नाइट से वो फिर पूरा गैप डाउन हो जाता है रेट में, तो कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। जरा पहले आपका न्यूज बना था, ठीक है, अभी आप उसकी जैसे रिलायंस करिए, कल एक तो भयानक न्यूज बना ऑन द नेगेटिव साइड, कल से रिलायंस धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू, ठीक है, कल 1% ऊपर बंद हुआ, परसों फ्लैट बंद हुआ, फिर 1% ऊपर गया, ठीक है। तो हमारे लिए कल का जो न्यूज मतलब यस्टरडे का फ्राइडे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वी हैव ड्रॉन वन एंकर न्यूज फ्रॉम दैट। ओके सर, इसके बाद नेक्स्ट एक मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद 2 दिन कोई न्यूज नहीं है, बट स्टिल द प्राइसेस आर गोइंग अप, ठीक है, एंड द प्राइस इज अबव एंकर न्यूज, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, कल का जो भी सेलिंग था वो ऑब्जर्व हुआ, वो ऑब्जर्व किसने किया मेरे को नहीं पता, आपने किया, मैंने किया, मुकेश अंबानी ने किया, राकेश झुनझुनवाला ने किया, उससे अपने को कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने भी सेल किया उसको नुकसान, एंड द प्राइस इज अबव एंकर न्यूज। तो मेरा और आपका रिलायंस में क्या ट्रेड होगा, तो भैया न्यूज कितना भी नेगेटिव था बट द प्राइसेस आर पॉजिटिव। ओके, ओह Dada, understood. Dada, you will always see it from the seller's point of view, what's happening with them, right? Even for stocks. Yes, from everywhere, दादा। अभी आप ये आप कल का ही आप देखो, अब कल का देखो, ठीक है। What is the status of a person buying a future? How much margin is investing for buying a future, or how much margin is investing for selling a future? How much margin someone is investing for selling a put? किसमें ज़्यादा margin involved है? मार्जिन पैसा कहाँ जा रहा है सेलिंग। तो हमको किसको देखना है, बड़ा पॉकेट की छोटा पॉकेट? बड़ा, ऑब्वियसली बड़ा पॉकेट। अभी आप ये बताओ, आपके पास 2 ड्रम है, दोनों कंटेनर है, आपको बोलेगा एक में 10 लाख रुपीस पड़ा हुआ और एक में 1 लाख रुपीस पड़ा हुआ, which container you will try to pick, 10 lakhs or 1 lakhs? 10 lakh. बस तो फिक्स वाली बेसिक फंडामेंटल है। सो वी विल कंसंट्रेट, भाई वो 10 लाख वाला जो है वो उसमें हम ध्यान देंगे, फिर थोड़ा देर बाद हमको पता चला कि वो 10 लाख का जो नोट था तो पुराना नोट था, तो फिर हम किस पे ध्यान देंगे, वो 1 लाख में, तो 10 लाख तो जीरो हो गया। तो हमको यही आइडेंटिफाई करना है दिन भर बैठ के कि भैया बायर ट्रैप हो रहा है कि सेलर ट्रैप हो रहा है, और मेरे को कोई काम नहीं है। तो मैं आपका जो लाइव एग्जांपल दूं वैसे एक्सपायरी का। यस सर, प्लीज मत कीजिए प्लीज, सॉरी, थैंक यू से मैं माथा ही करूंगा, दिस आर एक्चुअली स्पैम। अरे दादा बहुत मजेदार बात है, बिकॉज़ मैं ऑप्शन सेल करता हूं स्टॉक्स के, ये भी आपको बड़ा अच्छा मिल नहीं दादा प्लीज, स्टॉक्स ऑप्शन सेलिंग इज वेरी डेंजरस, यू विल गेट किल्ड। बंद कर दीजिए इफ यू आर डूइंग स्टॉक ऑप्शन सेलिंग,
आई एम टेलिंग यू। इसमें वो कवर कौन करता है एनीवे ऑफलाइन, और इसमें क्या है ना, वॉल्यूम्स नहीं होता है तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है। बैंक निफ्टी का जून का 33,500 का कॉल, ये 33,500 का कॉल है तो राइट सर। ये आप देख रहे हो हाइट 284। यस सर। ये यहाँ से रिवर्स क्यों किया तो बोल सकता है, ये यहाँ पे क्यों रिवर्स किया कोई बोल सकता है? आपको याद है आप लोगों ने फेस टू फेस देखा होगा मेरा, तो मैंने उसमें विवेक बजाज की एक बात बोला था कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ सिस्टम कि व्हाई अ पर्टिकुलर रिवर्सल फ्रॉम 100 एंड नॉट 99 और नॉट 98 एंड हाउ आई विल ट्रेड। मैंने दो चीजों को अभी मैं आपको इसको मैजिक दिखाऊंगा। हम लोग जो इतना 1 घंटा से जो बकबक कर रहे हैं उसके कोर्स में मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन का हाई एंड लो बिकम्स इंपॉर्टेंट, कहा था तो यस सर यस सर। हम बोल सकते हैं ये हाई है, आपको क्लियरली दिख रहा था मेरे को आपको। Yes. यस ये आयशा है आपको सबके पास है। ये क्या डेट है आपका, ये 9/15/27। ये देखिए कैंडल बन गया। अब आप खाली एक कैंडल के ऊपर में प्राइस देखो, आपने इसको थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं बिकॉज़ 1 मिनट बिकम टू एक क्वेश्चन है क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले भी है क्वेश्चन करते हैं जो भी दिखा रहे पहले उसको बात कर लेते हैं फिर क्वेश्चन। अभी आप खाली इसका प्राइस नहीं दे दो कि इस कैंडल के इस लाइन के पास जब भी ऑप्शन जा रहा है तो वहां से ले सकते। आपको दिख रहा है यहाँ पर गया 10-20, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज किया, स्पाइक किया, स्पाइक डाउन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंडल क्लोज हुआ क्या 5 मिनट में? नहीं हुआ सर, वापस अंदर ये अपना 29 जून का है ना, इट स्टार्टेड फ्रॉम 111 went to here। आपको दिख रहा है 241 280 हाँ 280 but there was no candle close on 5 minutes and doom 0। this is regular। आपको पता है this is regular, it will tell you what is the game। देखिए how you will play it। अभी इसमें क्या होता है कि आप बोलोगे दादा इसका मतलब हम इसको यहाँ पे बेच के यहाँ पे कवर करेंगे ना, भाई कभी नहीं है। आप 130 पे कोई ऑप्शन बेचोगे, सपोज कोई ना सेलर, ये भी आपके नीचे है तो ये सेलर हो गया ना। Yes. तो मैं 130 पे बेचूंगा और मेरा 280 का स्टॉप लॉस, वैसा ट्रेडिंग होता है क्या? आपको अगर मैं बोलूंगा तो कलकत्ता की जूता से मारिएगा, ऐसे तो ट्रेडिंग नहीं होता है। थोड़ा देर पहले मैंने इसको आपको लोगों को बात बोला था, वीव है बोला था क्या? यस करेक्ट। ये ब्लू लाइन बन गया फिर आपका, दे क्रॉस हियर ड्यूरिंग द डे। देखिए जिगजैग के एकदम थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, यहाँ पे क्रॉस किया ऊपर गया, एंकर भी आपके नीचे आ गया, यहाँ पर आपका ये सेल ऑफ हो जाता है 170 पे, फ्रॉम 170 to 0। हमारा कब ट्रेड होगा इंट्राडे में? वीवैप के नीचे, जब ये वीवैप के ऊपर है तब हम ट्रेड लेंगे क्या? नो लास्ट 1 घंटा पे तो हमने बात करी ट्रेड लेंगे। नो तो यहाँ पे मेरा सेटअप आता ही नहीं है, मेरे को पता है एंकर वीवैप के नीचे है लेकिन ये वीवैप के ऊपर है, तो मेरा ट्रेड तो ज्यादा बनेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना? ये बनेगा ट्रेड? नहीं बनेगा। ये तो हमारा सेटअप है, यहाँ गया है, यहाँ से रिवर्स हो गया, तो मेरे को क्या पता चल गया कि भाई ये जो एंकर्ड वीवैप है ये इसको फंसा दिया, ये इसको ऊपर नहीं जाने दे, ये हमको पता चल गया। अब ये इसके नीचे आया तो मेरा सेल हो जाता है ये ऑप्शन 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस से, एंड फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग 0 बेसिकली बिकॉज़ यू आर नेवर चैलेंज्ड ड्यूरिंग द डे। यहाँ पर एक तो आपका आया एंकर वीवर कर वाले पे स्टॉप लॉस से एंकर वीवर का ट्रेड नहीं ले रहा हूँ ना, टू फार नहीं मैं बोल रहा हूँ एंकर वीवर का स्टॉप लॉस लगा देते हैं वहां पे ट्रेड लेके। दादा बहुत बहुत ऊपर हुआ है देखिए 170 into 40 70 पॉइंट्स में तो दादा मैं 3 बार ऑप्शन खेल के आया
सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। अभी रुकिए। अच्छा ओके। आई हैव नॉट कंप्लीटेड। ये हमारा एक सेटअप है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में या इस वीक में कभी भी ओपन इंटरेस्ट। ये प्राइस ऑफ ऑप्शन ऊपर जा रहा है, ये भी इंक्रीज कर, एक बार ये डिक्रीज किया, देखिए जो कैंडल मैंने देखा एक बार ये डिक्रीज किया, फिर यहाँ से जो एंकर भी वेब से ये जो रिवर्सल आया, दिस आई कैन सी कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 25 लाख है, 25 लाख छोटा नहीं कि यहाँ पे गेम चालू हो गया, ये ऑप्शन में वापस नहीं भागेगा, ये मेरे को पता है। ये जो ऑप्शन है ना ये वापस नहीं भागेगा। व्हाई? एंकर हैज बीन रिजेक्टेड बिलो विगा एंड वाइज इंक्रीज। इस ऑप्शन को 20-30 रुपए पे अपने स्टॉप लॉस से अपने बेच देंगे और इसको अपने आराम से जीरो पे कमाएंगे। अभी हो सकता है आपने एक बार 170 पे बेचा, 190 पे आपका स्टॉप लॉस खा गया, वेरी गुड, वी हैव व्हाट वी हैव लॉस्ट 20 पॉइंट्स। वापस ये 170 आया, वापस मैंने बेचा 170 पे, फिर 190 पे गया, फिर मेरा स्टॉप लॉस खा गया। कितना मेरा स्टॉप लॉस हुआ? और 20 पॉइंट्स। कितना लॉस हो गया? 40 पॉइंट्स। फिर मैंने 170 पे बेचा, फिर ये जीरो। कितना मेरा प्रॉफिट हुआ? टोटल 130 130। और व्हाट वाज माय स्टॉप लॉस? 40 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स। तीन स्टॉप लॉस डब्बा बंद, घर जाओ। आज हमको ट्रेड नहीं करना। ये तो रूल बनाना होगा, नहीं तो पैसा नहीं है। आप कितना बार स्टॉप लॉस कीजिए, ठीक है? सो दिस इज द वे वी ट्रेड। अभी इसमें एंकरिंग अगर आप बोलोगे कि हम तो यहाँ से एंकरिंग करेंगे, हम तो वहाँ से एंकरिंग करेंगे, तो गलत है। यू हैव टू आइडेंटिफाई अ रीजन टू स्टार्ट है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, अब आप थोड़ा पीछे जाओगे, अगर आप इसके ऊपर भी प्राइस आपको दिखेगा, राइट, इस ऑप्शन का, तो हमने वहां से क्यों नहीं लिया? ये हमारा कब से क्या हम ट्रेड कर रहे हैं? वीकली ऑप्शन। व्हाट इज दिस ओआई? यहाँ पे ओआई 8 लाख का ओआई है। 8 लाख, हाँ जी। 8 लाख का ओआई कुछ नहीं होता। और ये जो आपका 22 जून है, दिस वाला एक्चुअली मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी में तो पोजीशन बिल्डअप होता रहता है पूरा मंथ में, इसीलिए आपको यहाँ पे 8 लाख दिखते हैं। ये ना कोई वीकली होता ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक, तो यहाँ पे आपको 10, 20, 25 आ गए। बेसिकली ऑन थर्सडे सेकंड हाफ दिस राउंड नंबर स्टार्ट टू मेक सम पॉइंट। ओके। तो हम जब भी एंकरिंग कर रहे हैं, अभी आप सपोज कीजिए यहाँ पे 100 वॉल्यूम, ठीक है, और एक प्राइस है 1000, हाँ जी, यहाँ पे 2000 वॉल्यूम और एक प्राइस है 900, कौन सा इंपॉर्टेंट हो, 1000 की 900? 900। क्यों? यहाँ वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम। सो जब भी हम एंकरिंग कर रहे हैं, तो एंकरिंग नीड टू बी फॉलोड बाय अ न्यूज़ व्हिच हैज मूव्ड द प्राइसेस, ठीक है? अब जब न्यूज़ मूव प्राइसेस होता क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम आ जाता है स्टॉक्स में। ऑप्शंस में क्या होता है, क्योंकि हम लोग वीकली ट्रेड कर रहे हैं, तो व्हेन वी आर ड्राइंग फ्रॉम अ हाई, ठीक है, तो हम देखेंगे उस हाई पर ओआई है कि नहीं। ओआई मींस वॉल्यूम। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लें, नंबर पे आएगा। हाँ, हेलो सॉरी, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हमको वी स्टार्ट एट 12:30 स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू। आप गरम हो जाते थे इनको। In the last 2 years, more than 10,000 people
चलिए, let us talk about benefit. ये दोनों का बहुत बात कर ली है, and I think by now anchoring and all those things are clear. अगर भी आपको काम का बात नहीं था, अच्छा, हेलो, दादा एक क्वेरी है, जैसे हम एंकर डिटेल जिस कैटल्स में ड्रॉ करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि जिस सेलर ने सेल करा होगा वहाँ से तो वो पेन में आया है तो उसने स्क्वायर ऑफ कंफ्यूजन की पोजीशन नहीं वो नहीं तो देखिए मार्केट क्या है ना मार्केट इज अ मूविंग ठीक है जिसने भी रिलायंस बाई किया ऑन द फेसबुक डील वो ऑफ कोर्स अभी तक थोड़ी ना अपना फ्यूचर होल्ड करके रखा हो ही मे हैव एक्सटेड बाय बुकिंग द प्रॉफिट और बुकिंग द लॉस व्हाटएवर इट मे बी but what we are identifying here identifying the moving prices the moving average prices okay we are trying to identify what is happening with the full volume traded after that particular candle whether that volume is on the bearish zone or on the bullish and based on that we will do okay ठीक दादा वो आप बोल रहे थे कि 3500 कॉल का हाई बना वो क्यों बना वो थोड़ा क्यों बना हम वो नहीं बोले कॉल का हाई हम बोले कि वहां जहां से हाई था वहां से मैंने एंकरिंग था और उस एंकर के बाद मैंने 5 मिनट ट्रेड के देखा कि वो हाई कभी भी क्रॉस नहीं
वो स्पाइक कर रहा है, टिक बना रहा है, वापस नीचे आ रहा है। एंड देन ऑन थर्सडे along with the VWAP और ट्रेड कब हो, we will sell, मतलब we will take a bearish position in a call, means we will sell the call only when the call is trading below VWAP. ये तो हमने बात कर ही चुके हैं कि we will never trade against VWAP. During the day we have seen the call is going above the VWAP, so our trade is not up. Then we have seen the call made a particular high which was near the anchored VWAP on a weekly time basis. The anchored VWAP was not crossed. The call started reversing from that point. Here we have seen that the OI in the call is also increasing. From a low of 22 or 23 lakhs, it started increasing. And then during the day we have seen the call has gone below the VWAP. So it becomes a sell trade around 170. The VWAP was around 170. ठीक है? मैंने अंग्रेजी में इतना बोल दिया, आपको नहीं समझ में आया होगा, समझ में आया नहीं चाहिए। ये सारा हम लोग लाइव तो जहाँ पे आप सेल कॉल बोल रहे हो वहाँ पे आप पुट भी बाय कर सकते हैं अगर मेरा बाय कर सकते हैं दादा, कम है पैसा कम, ठीक है दादा। लेकिन आप ये याद रखिएगा, there is a difference between buy put and sell. Sell call can give you money, but buy put will not give you. अभी इसका मैं आपको समझा दूँ 33,500. On that day I posted on Twitter that keep eye on this 33,500. That 33,500 is scheduled at that point of time was trading around 343, if I remember correctly, and it closed at 0 या 100. It is so both the call and put become 0. इस एक्सरसाइज हाँ जी मैंने पोस्ट भी किया, ये उल्टा पुल्टा पोस्ट करता है, ये देखिए 316, ठीक है। ये आप देखो, एक कॉल का प्राइस उस समय कितना था, 148, 148. VWAP was 153 below VWAP. Put price is 168 below VWAP. दोनों ही ultimately में जाके 0. So if you have bought put, the call has went below VWAP, it has become 0. But your put is also. this is true, okay. This is not a trend, this is normal. If you are telling this is a trend, then you don't know. So you need to know this. You need to know many things. This is not at all a trend. This is very much normal. ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आपने ना बहुत सारा एंकर लिया, so I am reviewing those encoded data. See, I use TradingView, so I will use TradingView. I have already explained you what is difference between TradingView and Zero and Every Broker. Even if I plot AVWAP on TradingView and Every Broker, there are some differences because the Every Broker AVWAP is coming from an AFL, which is customized, correct? And this AVWAP is coming from TradingView based on their software, which is also customized. So there will be some differences, but I use this TradingView as my morning analysis. जब मैं आपको आप लोग देखेगा, जब मैं आप लोग को मॉर्निंग में पोस्ट कर रहा हूँ, तो I will use lot of TradingView charts. But when I am doing the live analysis in the market, basically I don't see Bank Nifty option. In the live market, I only follow the options. ठीक है? अभी आप देखो कि what is the date today? 2nd July. 2nd July. And what is the monthly expiry we are doing? 28th July. 28th July. July expiry. How old is this July expiry? Just Basically one day. So sitting today, if I want to draw everywhere, what I will get? Hi. Nothing actually. The Sitting volume. today, if I want to draw everywhere for the July expiry, I will get nothing. So what I will do next? इसका मेरे पास क्या सॉल्यूशन? आप लोग में से कोई भी पुराना कोई भी भाई नहीं देगा। एंड भाई solution might be because these वॉल्यूम expiries are जहाँ पे ज्यादा for वॉल्यूम 3 जनरेट months, हुई है, like started from last 3 months or 3 month का होता है, so near far end, so we can just track it from might be last month में जुलाई का क्या ट्रेंड था, so that might be gonna follow this month as well. Last month highs and lows. सर वॉल्यूम प्रोफाइल से जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ। Tell me anyone else? जुलाई एक्सपायरी का कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, उस पे मूवमेंट देखेंगे, का कंटिन्यूस हमको हाई लो बनाना है तो हम कहाँ से क्या करें?
हमें स्विंग हाई वॉल्यूम से देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा कहाँ पे है। वॉल्यूम आप सपोज कीजिए लास्ट वेडनेसडे को हुआ तो लास्ट वेडनेसडे से लेंगे तो होगा 2 दिन का एक्स्ट्रा। स्विंग मान लीजिए 10 दिन पहले हुआ, ये जुलाई में हमको 10 दिन पहले मिल गया, हम अगस्त में जाके काम करेंगे तो अगस्त में भी तो मेरे को सेम प्रॉब्लम है, उसमें मेरे को 20 दिन पहले मिला, फिर हम सितंबर में जाके काम किए तो वही तो सेम प्रॉब्लम आएगा। तो एक बार को बैठ के जल्दी बनाएंगे, माय प्रॉब्लम इज सेम, माय प्रॉब्लम इज कांस्टेंट, माय सॉल्यूशन इज डिफरेंट। someday I am going for 5 days volume, someday I am going for 10 days volume, someday I am going for 50 days। ऐसे होता है लाइफ की, हम लोग तो पढ़ाई की है तो वी आर ऑलवेज assume whichever is constant। What is the assumption? Assumption is always constant। Dada, when you are not talking to me, you are supposed to be mute। So in life, what we have assumed whatever is constant। We don't assume whatever is variable। ऐसा होता है क्या? हमको तो साइंस का पढ़ाई नहीं आता तो हम कुछ भी कांस्टेंट लिख देते थे कि assume to ये कांस्टेंट, assume to वो कांस्टेंट। जरा स्विंग हाई से करेंगे। क्यों हाई से करेंगे? Why swing high? And what will be the date of that swing high? 1 month, 2 months, 10 days, 15 days? Means in this month, suppose when I am doing for the July month, I may get a swing high 10 days back. When I go and do for the August month, I am getting a swing high maybe 30 days back. Then when I am going for a September month, I will get a swing high 15 days back. So what is happening here? My assumptions are changing on a daily basis, on a daily expiry basis, on every month expiry basis. Do you think a formula which changes daily is a workable solution? No. Suppose your car runs today on gas, tomorrow on petrol, day after tomorrow on diesel. Will you buy that car? No. What you will buy? Suppose the price of that car is 100 rupees. Even then you will not buy it because you don't know tomorrow on what material you will run. So what we need a solution which is constant. Correct? So for this sake, what we do till the end of the second week of the current week, we will take the last month, the last series, first day as a continuous expiry. We will take the full last month series as our regular। इसका मतलब ये हुआ जो मेरा जुलाई का जो भी हो रहा है तो we will start from the first day of the June series and this we will do till the second week, means till next Friday। What is this next Friday? 14, 15, ये 15 तारीख को खत्म हो गया। Then on 15 I am getting the volume from 1। 15 दिन का मेरे को वॉल्यूम मिल गया to draw the new anchor B there, correct? Yes. And this will be my July volumes। But when we are doing this on the 1st of July, we will start with the June। 27th May को हमारा जून का एक्सपायरी चालू, ठीक है? Okay. We will start with 27th of May, the June expiry first day as our anchored wave points for this July। ठीक है जी। और इसको हम चेंज कब करेंगे? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 वीक्स। ओके। जब मेरा 2 वीक एक्सपायर हो जाएगा तब मेरे को जुलाई में वॉल्यूम मिल गया 15 दिन का, तब मैं अपना एंकर वीक जो मैं बनाया हूं फॉर द बुकिंग आई विल चेंज हो जाएगा। करेक्ट? दादा प्रीवियस मंथ का हाई लो, प्रीवियस मंथ दादा अभी हम सिर्फ प्रीवियस मंथ पे हाई लो ओपन क्लोज पे बात नहीं की। अभी हम प्रीवियस मंथ क्यों ले रहे हैं मैं अभी आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और कब हम उस प्रीवियस मंथ को चेंज करें। हमको तो देखिए रूल्स सबको तो सेट चाहिए ना। मेरा गाड़ी क्या तो डीजल से चलेगा या पेट्रोल से चलेगा, ऐसा ही तो होना चाहिए कि एक दिन डीजल एक दिन पेट्रोल। तो मेरा इन दिस केस फर्स्ट 2 वीक्स तो हम 1 महीने का डेटा लेंगे बट लास्ट 2 वीक्स विल बी ओनली 15 डेज। Yes, 15 days। Because I am telling you okay, what is happening right those 15 days lot of position will be created in this which will move the next 2 week of the current series। अभी आप लोग ने देखा होगा कल सुबह सुबह मैंने आपको एक मैसेज किया था कि भाई टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी सो द लॉट ऑफ डेटा विल बी बिल्ट इन द मार्केट व्हिच विल मूव रैंडमली। कल अपना रैंडम डेटा नहीं मूव हुआ, जस्ट द मूव वाज रियलाइज एज इट वाज अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट। अगर आप रिलायंस और निफ्टी का मूव हटा दोगे ना यू विल सी कि इट वाज अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, जनरली क्या होता है कि फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी जब होता है ऑफ दिस मंथली एक्सपायरी तो बहुत सारा पोजीशन रोल ओवर जो होता है रोल ओवर बदला जो होता है वो सारा होके नया नया पोजीशंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो
वो पोजीशन आपको 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगता है पोजीशन देने में। तो वो उसका जो मैच्योरिटी होता है ना, पूरा मैच्योरिटी अपने को 10 ट्रेडिंग के बाद मिलता है, बिकॉज द एक्सपायरी सपोज टू बी ऑफ 22 days, सो आफ्टर 10 days इट इज 50% हैज बीन पास्ड। तो उस डेटा में अपने फॉर द नेक्स्ट 10 days वी कैन बिलीव ऑन दोस लास्ट 10 days। When we are starting from the first day of this series, we will take the last full series, ठीक है? लास्ट मेरा जो फुल सीरीज है उसका डेटा मैं दूंगा, और उसके बाद आफ्टर दिस 2 weeks we will move to the next, मतलब द करेंट सीरीज। ये मैंने बार-बार करके देखा बॉस, दिस गिव्स अस द बेस्ट। इसको आप बोलोगे दादा आप बाद में 15 दिन ले रहे हो, इसलिए मैं अभी भी 15 दिन लूंगा। आप इसका कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन दी तो भाई मतलब आई डोंट हैव डिटेल एक्सप्लेनेशन, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू वर्क्स द बेस्ट। ठीक है? ओके, ठीक है। Will we go ahead? या अभी तक सब क्लियर है? जी। Yes. 20 मिनट में अपना सेशन कंप्लीट होगा। अभी हमने ये तो सीख लिया कि हमको कैसे क्या लेना है। अब इसको मेरे को टैबुलेट कैसे करना है, हमको तो लिख के रखना होगा कि याद हो जाएगा डेली। बैंक निफ्टी कल कितना पे क्लोज हुआ था मेरे को तो ये भी याद है। ये एक तो शीट है दादा जो आप लोग को डेली बनाना हो। इसमें कुछ कॉलम्स है जो अपने को भरने हैं, कुछ कॉलम्स है जो आप लोग को इग्नोर कर देने हैं। इग्नोर इसलिए कर देने हैं कि कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो सुभज्योत पंडित सर जो है आप लोग जानते हैं कि उनका स्टूडेंट उनका सिस्टम से आता है, तो वो सिस्टम मैं आपको सिखा नहीं सकता, मैं आपको पास ऑन कर सकता हूँ, बट वो जो लेवल्स है वो अपने जरूर शेयर कर सकते हैं, उसमें सर को भी कोई इशू नहीं है। ये बैंक निफ्टी सीएमपी हम और आप सबको लिख सकते हैं जी। चलिए सबको लिखना आता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का अपना करेंट प्राइस है 33,726, लिख दूं? ओके, यस अभी मेरे को ये लास्ट मंथ से मेरा चार्ट है, प्लेन चार्ट है, कैंडल स्टिक 55 मिनट्स, ठीक है? जी। आप इसको अगर 1 मिनट में करोगे तो ये ऐसा कुछ होगा, और आपको अगर इसको ऐसे 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 करके करना होगा पूरा घुस-पुस हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। सेम विथ ऑल दिस मिनट्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 55 मिनट्स में, आप बोलोगे दादा मैं 15 मिनट में प्लॉट करूंगा, आई डोंट हैव एनी इशू, आप 15 मिनट में प्लॉट कर लो, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं 55 मिनट्स प्लॉट करता हूँ तो बेसिकली मेरे को क्या होता है कि मेरे को मोटा मोटी 60 से 65 दिन का डेटा एक सिंगल स्क्रीन पे दिख जाता है, विच हेल्प्स मी बेसिकली। अभी आप जैसे देखो मेरे को यहाँ पे कैंडल दिख रहा है, इस लेवल पे दिख रहा है ना कि अपने यहीं पे क्लोज हुए, एक तो बड़ा सा कैंडल बना 34 से 100 का, जो मैं थोड़ा देर बाद बोलने भी वाला हूँ। अभी आप ये कैंडल का हाई देखो, इस कैंडल का कितना हाई है? 117। 34,130। यहाँ पे कैंडल वाला इसका कितना हाई है? तो ये जो बड़ा बड़ा कैंडल बनता है ना दादा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट 30, 40, 50 डेज में जो अपना कैंडल्स बनता है, these are big basically of 500, 800, 1000 पॉइंट्स, those have some significance। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा विजुअल हो जाए ऑन अ सिंगल स्क्रीन व्हेन आई एम सीइंग इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये जो स्क्रीन है मैं हार्डली 1 से 1.5 सेकंड देखूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं देखूँ। चलिए अब भी मेरे को ये पता चल गया कि मेरे को जो ड्रॉ करना है एंकर में, मेरे को फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। दिस इज क्लियर विद एवरीवन? जी। वी हैव टू ड्रॉ द एंकर फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। I don't use volume profile boss. This volume profile is just for the pictorial representation. This does not hold any significance. If we are not talking about something, it means that it is just for the pictorial representation, nothing else. So I think everyone is clear that why I am using the previous one. There is no question on that. Please, yes, 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 yes. 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 या Here you will see one high is here, highest point, correct? Yes. But what we can see that this is a weak. This can be a fake high, which I think it is the fake high. You can see this 36,300. You know, we can see the visually, na? This is a fake high. Then what we are seeing? There are 1, 2, 3.
3 or 4 candles which are forming here. I'm just looking at it. Correct? Yes. Around 36,000. Then there is one candle forming here around 35,500. Then I am seeing there is one candle here also around 35,800. Okay? Which is the highest point. Will I take this? This is the full body candle around 35,990. I can say this is the 36,000. Just ignore this 600 point. This 600 point must be the fake. But this 36,000 to 35,800 is the actual traded price. Clear? Based on this candle body, we can say hello. Yes. Yes. Yeah. Here we are also getting high around 36,000. Which one we will take? The high of the month. This 36,000 or this 36,000? And why? The one where we can get more volume, that's better. Anyone else? Yeah, he's right. Same expectation. See, we will always go with a plus minus 1% difference. Suppose here it is 36,300, correct? And here it is 36,000. Then what is the difference between 36,300 and 36,300 points? Yes. Which is within a variance of plus minus 1%. So we will start with this 36,000 and not this 36,300. Correct? Because here what we are getting this much additional volume. Okay? Yes. Yeah. Got my point? Suppose here it is 36,000 and here it is 36,800. Then what we will do? We will start with 36,800. If only the last candle, the previous candle high is plus minus 1%, then only we will go with the previous candle. Both for the high of the candle or the low of the candle. This when we are drawing from the highest area and when here when we will see, we will discuss this. So what I will do, I will just click this. Now I need to show you this. I think this on the free one, this is. I just click here and click here. Here I am writing one AB value. Abhi, what you just see what is happening in this thing. See how this works. It went till here and go. Clear? Abhi, how we will trade वो भूल जाइए. Trading is completely different. What this ABWAP is doing to us, this is telling us कि what is the broader structure of the market. अभी आप ये बात बताओ कि when you are trading a stock, आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज करते हो? Just please फटाफट. We are running late. Usually 20. 20. Huh? 20 days. Yeah. 20. Anyone else? 15. 15 or 50? 5. 5. 50. 50. अच्छा, now tell me which is more solid, 20 or 50? 50. For trending मतलब. आए ना वो उतना मत बात कीजिए, खाली बोलिए 20 or 50 बस. 50 sir, 50. More reliable. More reliable, why? Because it is giving us a larger picture. Yes. Because it is taking care of both 20 and plus 30 candles. This ABWAP, this monthly ABWAP is basically your 50-day moving average. How we will trade is a completely different. But this will tell us what is the market structure for me. This ABWAP is telling me that the broader market structure is bearish. Tomorrow if Bank Nifty is going 800 point up, will I short the Bank Nifty? आप बोलो. आप शॉर्ट करो या कल ही तो मैंने पुट बेचा. Instead of this ABWAP telling me that the market is bearish, what I have done yesterday, I was selling put. ठीक है? जी. लेकिन ये स्ट्रक्चर मेरे को क्या बता? Market is weak. Bearish. मार्केट इज बेयरिश. अभी मार्केट 34,200 पे बंद हुआ. सपोज कीजिए, अभी मत आइएगा, अभी मत चल जाइएगा एकदम भी. बहुत मिस्टेक कर दीजिएगा अभी जाइएगा. चलिए वापस आ जाइए. Suppose tomorrow market closes at 34,200. Then what will my start? Market क्या हो गया? Bullish. From where? From where? From 36,000 level. जिसने यहाँ बेचा वो भी फंसा. करेक्ट? ये तो भी आप जानते हो.
अभी मत बोलिए हमको नहीं पता था जी। अब 1.5 घंटा बाद ये तो हमको पता है। अभी आप चला जाओ 11:50 पे, तो मैंने 11:50 नहीं 10:50 पे मैंने आपको क्या कहा था, मैंने एक तो सेशन जब मैं और सिंह जी बात कर रहे थे ना 39,000 फुट कि मैं देखूंगा वो कब फंसेगा जी। वो कब फंसेगा जब मार्केट 34,200 पे होगा। वो कब मतलब फंसेगा, सॉरी मतलब आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, एक्चुअली वो कब पैसा कमाए जब मार्केट पैसे कमाएगा जब मार्केट 34,200 पे जाएगा। अब मेरा क्या बारी है, आपकी बार 38,000। अभी आपका डॉट कनेक्ट हुआ, माथा में खुला, कब हमको उसको 39,000 को पकड़ना जाके। अभी आपको समझ में आया मेरे को कब उसको पकड़ना है, कब मेरे को समझ में आएगा कि वो बेटा 2 महीने से क्या गेम खेल रहा है। वो प्रिपरेशन कर रहा था जुलाई होना चाहिए वहाँ पे एक दिन या एक बार हाँ नहीं अभी एक दिन तो ये वाला डंडा बन जाएगा। करेक्ट, वही बोलो तुम्हें। एटलीस्ट देख लो, जब आप 2,000 पॉइंट का बात कर रहे हो तो 100-200 पॉइंट तो दोगे मार्केट को। अभी आप वापस सोचो कि अभी आप सोचिए दोनों चीज कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ जी। और मैजिक लगा के दो कि कब कब हमको वो चीज यूज करना। अब भी मेरे को उसको देख के कोई फायदा नहीं होगा। अभी अगर हम उसको देखेंगे तो मेरा क्या होगा, खाली टाइम खराब। दादा एक क्वेश्चन था, बोलिए। दादा जैसे इसमें हम लोग भाव कॉपी में मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं ना, तो उसी को पर्टिकुलर को आप ट्रैक कर रहे हैं, तो ये कैसे पता चलता है कि हम लोग किसको ट्रैक करना है? जैसे आप बात करेंगे, बात करेंगे। ओके दादा, ओके दादा। अभी खाली आप ये सोचिए कि दोनों का कनेक्शन और क्यों हम यहाँ नहीं देखेंगे, क्यों हम इसके ऊपर देखेंगे, वो मेरे को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जी दादा। whether this is sounding logical or not? लॉजिकल, completely logical. या तो इसके ऊपर क्लोज होगा तब हम डाल दो अपने चैट में। What is no दादा, what is could not hear, please repeat दादा, I am so loud, please repeat, could not connect. See what I am saying is that when someone is selling 39,000 put, he is selling the put to make money, and when he will make money, when the market shifts, he will become bullish. Right now, as this AV value which we have drawn, the monthly highest AV value is at 34,130. The moment Bank Nifty starts to trade above this level, I will know that 39,000 put selling is in the game and he is supposed to make big money. Because here if he is selling, suppose if he is selling this put at 33,000, he is selling 33,000 minus 30 means he is selling around 6,000 points. Here it will be at 5,000 points. Now as my market structure is changing, and that 39,000 put seller, which is supposed to be a informed person of the big money, will be making a lot of money, and I will start following his trade, or I will start following his footsteps. Whether at 4,000 point or 5,000 point he is increasing the quantity. If he is increasing the quantity, it means he is expecting much more up move, and if he is decreasing the quantity, it means he is getting booked his point from this to this, and now he is expecting a reversal like this. Okay. Can you please show 39? Okay. No, I won't show those things won't matter. अभी शाम का 5 बज जाएगा दादा। Now what will you do? Dada, for this point, we will also continue to track SBFC and the bank because that will push it, right? Oh, you will see those, everything will come into the picture. कोई चीज एक बार में नहीं है, मतलब आप देखोगे HDFC भी आपका सारा एवी का ग्रीन हो गया है, एक्सिस का ग्रीन हो गया, ICICI का आपको सब दिखेगा दादा। We are making a Excel sheet. That Excel sheet will talk to us, provided we want to listen to. अभी आप सोचोगे कि हमको दादा Excel sheet भेज देंगे, हम उसको देख लेंगे, उससे हमको पैसा बन जाएगा, तो आपका पैसा लग जाएगा कुछ नहीं, हम लोग करेंगे सैंपल अभी ये जो एक क्वेश्चन चार्ट पे। हाँ बोलिए। तो आपने कहा इसके ऊपर अगर वो ट्रेड करेगा तो कितना ऊपर, आई मीन कितना ऊपर? नहीं 100, 200, 500, 1000, 2000 कुछ नहीं पता होगा। हमको नहीं पता, मार्केट ऐसा भी तो हो सकता है जैसा कि एक दिन ऊपर जाके नीचे आ जाए। तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे ऊपर जब जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या कैंडल है? बेरिश कैंडल है, लाल कैंडल है। आप कल थे मेरे साथ? कल आप थे क्या? हाँ।
कल मैंने सुबह में एक तो चार्ट पोस्ट किया 9:15 के बाद। हाँ जी, हाँ, कि कोई भी कैंडल वीवर अच्छा ये लाल कैंडल और ये हरा कैंडल, इसके नीचे मेरा कुछ कमेंट लिखा कि बैंक निफ्टी नीचे खुला, बट दिस 15-minute कैंडल इज नॉट अ बियरिश कैंडल, आई एम नॉट सीइंग एनी फॉर्मेशन। तो हमको ऐसा कुछ देखिए, आप 55 मिनट बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं कर सकते, 55 मिनट्स इज टू लॉन्ग फॉर इंटरनेट ट्रेडिंग। देखिए व्हाट वी आर, हमारे आपके 200-500 करोड़ रुपया तो है नहीं, है क्या? हम आप 2 लोट 4 लोट वाले ट्रेडर हैं, ठीक है? लेकिन आप कभी भी कुछ ट्रेड कर, आप सपोज कीजिए आपको कलकत्ता से, मतलब आपको कहाँ रहते हैं? जम्मू, आपको जम्मू से दिल्ली पहुंचना, ठीक है? तो आपको एक रूट प्लान बनाना होगा, either I will go through a train, I will go through a bus, or I will go through a flight, ठीक है? तो this is the trade plan. Then how I will trade is the different. कि मैं ट्रेन से जाऊंगा तो मेरे को पता ओवरनाइट जर्नी, मैं अगर फ्लाइट से जाऊंगा तो इट इज अ मैटर ऑफ 1 hour. Everything becomes different. But what we are doing, we are just forming a view. We are trying to dodge the market structure so that when we are trading intraday, we are super confident about our trades. Got my point? ठीक है, यस सर। अभी क्या मैं डाउट इन माय दिस इज द हाईएस्ट एरिया 54,084, मैं लिख दूं? यस 34093 हाई एरिया 34093, मैं लिख सकता हूं तो? यस हेलो, यस यस दिस इज माय मंथली एरिया फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। इसमें हमको कुछ नहीं सोचना है, जो मंथली है वहां पे आके क्लिक करो। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर ग्रीन कर देता हूं, यहाँ पे आ गया 34,150, यस लिख दो 148 डर है 150, ठीक? और इसको भी 34,100 लिख देते हैं, 93 98 ऐसा बैठ के 5 पॉइंट कुछ नहीं, ठीक है? अभी आप दादा व्हेन यू विल बी डूइंग इन जीरोडा ना, दे विल बी डिफरेंस ऑफ 50 74, उसको लेके बहुत सारा मैसेजेस नहीं कीजिएगा, ठीक है? एंड ये 55 मिनट को अगर आप 5 मिनट में कन्वर्ट कर दोगे देन आल्सो दे विल बी बैंक निफ्टी में प्लस माइनस 40-50 पॉइंट डजंट मैटर। अभी अब मेरे को एक और क्या डालना है, मेरे को लो एरिया, देखिए अपने 4 एरिया फॉलो करते, लो, हाई, मंथली एंड द वीकली। हाई और मंथली आपको समझ में आ गया, मंथली में तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमको फर्स्ट डे से डाल देना। व्हेन वी विल बी ट्रेडिंग, व्हेन यू विल बी डूइंग दिस ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, नो नॉट नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, 15 तारीख के बाद जो भी आपका आएगा उस दिन ये आपका मंथली एरिया चेंज, दैट विल बिकम द 1st जुलाई, ठीक है? यस ठीक है, यस यस और हाई और लो में जो भी चेंज होगा, फिर आपका ये जो हाई है हाई भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज दिस विल मूव, लो रहेगा वो भी चेंज होगा, ठीक है? यस सर। अभी आप देखिए लो में हमारा एक एरिया यहाँ बन गया विद अ स्मॉल विक, बट दिस इज अ ट्रेडेबल विक। देखिए यहाँ पे दिस वाज नॉट अ ट्रेडेबल विक, बट हियर इट इज, आई थिंक इट इज अ ट्रेडेबल विक। यहाँ पे 32,500, एक तो यहाँ पे बन रहा 32,400 और एक तो यहाँ पे बन रहा 32,500, so which one I will take? I will take this one. 17 I will this one because I am getting all this additional values. यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डाल दिया, then I am making this a ready. So what is this? 250 लो 33 250। अभी आप ये बताओ, मेरे को ये तो पता चल गया ये 32 yes. यहाँ से द लोस से जिसने भी सेलिंग किया फ्रॉम 17 जून, एनीवन हु शॉर्टेड द मार्केट फ्रॉम 17 जून वेदर 32,640 और वेदर 34,180 इज इन पे। ये तो क्लियर हो गया जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसको लेके मेरा लाइफ में? यस सर। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है कि मेरा जो 20 डेज मूविंग एवरेज है इट इज bullish, my 50-day moving average is bearish. This 20 and 50 I am just telling you as alpha, though doesn't hold any significance, correct? From the lows the market is above the area, but from the highs and the monthly the market is below area, ऐसा ही तो? yes So tomorrow what will be my first suggestion? Here 34,100 to 34,150, आपको तो ये पता है कल मार्केट अगर सपोज सीधे कल मार्केट खुला, ठीक है? अभी मैंने आप लोगों को पता होगा थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को कहा कि आई वाज एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप, इसलिए तो मैंने वो फोटो डाला कि लाल कैंडल बना लेकिन चुपका सा ग्रीन कैंडल, ऐसा ही तो?
वो मैंने क्यों डाला, वो इसके लिए डाला। When we started the class, I have removed some elements. यहाँ पे जरूर एक एरिया बना हुआ, which I can see कि हाँ, it opened lower because of the gap down, but it is not going down. And now you just see why it reversed from why. उस दिन बैंक निफ्टी हाई मारा था ना 34,180 का, अभी आपको नहीं लग रहा कि ये रिवर्सल यहीं से क्यों आया सर, यहाँ पे क्यों नहीं आया हाई मारने के बाद? From 34,180 we went to 33,100. It's a move of 1,000 points. कल भी तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता. But if tomorrow Bank Nifty opens suppose anywhere and this 34,100 acts as a resistance and Bank Nifty starts to trade below VWAP, then what I will know that this line is acting as a resistance and market can go down. Till the Bank Nifty is below VWAP, my trade stance will be bearish. Suppose market is opening at 34,800 or 9. ठीक है? Hello. जी जी. yes sir. 34,800 or 9. ठीक है? Market is above it. What I know is this 34,100 to 150 is a very strong resistance. Yes. Because this 30 days volume is getting tapped in. So what I will do? I will wait. And Nifty में 200 पॉइंट 300 पॉइंट के लिए ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ है. What I will do, because any time you will see the reversal time, what I will do, I will wait. But if the market closes 34,200, तब मेरे को तो पता नहीं भाई, the next target is the moon. The market is now super bullish. ऐसे ही तो सोचना होगा कि और कुछ सोचेंगे. Yes, yes, yes. वापस से सोचिए मैं क्या. अगर एवी बैक के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो सुपर बुलिश, बेसिकली बेरिश से आपका बुलिश बन जाएगा. अभी आपको समझ में आ रहा, अभी आप सपोज कीजिए मार्केट कल खुला हुआ, ठीक है, it crossed anywhere or 50. Yes, sir, your voice is not audible. Yeah, just a minute. चलिए, अभी आप सपोज करो मैं आपको अपने दो तीन सिनेरियो का बात कर रहे हैं जस्ट टू क्लैरिफाई द प्रोसेस फॉर द थॉट प्रोसेस. ठीक है, व्हाट इज द सिनेरियो 1? द सिनेरियो 1 इज वी ओपनड एट 34,700, went to 34,800, 850, 900 and then started trading below VWAP. या सपोज वी आर क्लोजिंग एट 34,900. ठीक है, द हाई इज 34,900. बट व्हाट विल बी माय स्टैंस? माय स्टैंस विल बी व्हाई न्यूट्रल, बिकॉज यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस है, मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर बंद होगा, which is a bullish market, ना? But I know this 34,100 is a, or 100 to 150 is a very strong resistance point, so I will avoid carrying any overnight position. On Tuesday morning market can open यहाँ, can बनेगा, कुछ भी हो ही सकता है ना मार्केट में, but that is not my proper risk reward trade. Why? Because there is a strong resistance. ये मेरा सिनेरियो है. Come to scenario 2. Market open 500 point up, it went to 1,000 point up. Suppose यहाँ पे बंद है 34,700. 34,700 से रिवर्सल आके 34,300 पे बंद. ऊपर से it has fallen 400 points. It may be below VWAP. वही तो सकता है, ऊपर से आपका अगर 400 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो VWAP के नीचे हो गया. जी. तो भाई मेरा during the day it went to 1,000 point up, it came below and now it is closing below VWAP. तो आप क्या बोलोगे भाई ये तो हमारा रेड कैंडल बन रहा है. ठीक है, रेड कैंडल बन रहा है और कौन है भाई की तरह करता है, सॉरी कि रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन मैं कोई भी बेयरिश पोजीशन नहीं लेती नेक्स्ट डे.
Why? Because I know market is closing above the monthly and highest. That fall may be a trap or maybe a consolidation also from this 33,000. देखिए दोनों सिनेरियो कितना डिफरेंट है. In one scenario you are not taking a trade because you are expecting a reversal. In second scenario you are not taking a trade because you are expecting a reversal but on the bullish side. While on the first side you are expecting a reversal on the bearish side. दोनों में बहुत difference है. On Tuesday, market opened gap down and it below 34. मैं दबा के call भेज दूँगा. I will go and sell 33,500 call also. Why? Because my stop loss is 34,200. मेरा 100 point future में stop loss है boss. Clear? And the trade is coming. Why? Because I know market went up, came down, now again breaking the monthly and the highest level. So it is supposed to go down. अभी मान लीजिए go down नहीं होगी, go up हुआ तो भैया हमको 50 पॉइंट में stop loss लेके निकल जाएंगे. और लेकिन अगर मेरा ट्रेड सही हुआ, then what I am getting, I will be getting 200 300 of profit. What is the RR? 1:6, 1:6. This is the way you need to trade, or you need to sell deep IPMs, or you need to buy deep IPMs. So basically, we have to wait in the morning after cut-off to see whether the... You need to no, not morning or evening. You need to see what is market is doing and how the market is reacting at a particular. जो भाई पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं मार्केट में कितने मैसेज देता हूँ कि भाई अबाव इतना 200 पॉइंट में 50 भाग सकता है. तो 200 पॉइंट भाई 150, 200 पॉइंट 150 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है. बट अबाव वो जो मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर लेवल, दोस पर्टिकुलर लेवल्स आर कमिंग फ्रॉम दोस एरियाज. वो आपको पता होना. अभी आपको ये 34 200 का सिग्निफिकेंस है, 34 150 का सिग्निफिकेंस आपको 2 घंटा पहले पता था क्या? नहीं. अभी आपको पता है ना कि 34 200 पे क्या देखिए, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. कोई का भी सिस्टम नहीं बता सकता है कि 1 मिनट बाद मार्केट क्या करेगा. ठीक है, नो वन कैन टेल यू व्हाट द मार्केट विल डू आफ्टर 1 minute, but at least you will know that why the market is reacting like that at a particular level. Because here a good risk reward trade you can take. Suppose the market is just below 34,090, you can always sell a call, ITM call, or you can buy ITM. What will be your stop loss because you are taking a bearish trade? 34,150, 60 point stop loss on Bank Nifty. If you are wrong, what you are losing? 60 points. But if you are right, what you may gain? Just imagine that. What you can gain and what you can lose. What you will lose is always defined by 60 points. Correct? Yes. ये तो आपको पता होना चाहिए कि if you are taking a bearish trade at 34,090, your stop loss will be 34,150 और मैच टू मैच 34,200. उससे ऊपर नहीं हो सकता मैच. ये तो पक्का है जी. And why I am doing at 34,200 or 34,150? That is coming from some logical levels. It is not it is coming from out of the blue. So what I see when I am trading, I will define what I am losing. What am I winning that I don't know. So here what I am losing. Suppose if I am taking a trade here, what I have lost, nothing. What I have gained, within a week. सर एक एक्सेप्शन है वो जो स्टार्टिंग में जो कैंडल के ऊपर बनी है. क्या एक्सेप्शन है? आपको कभी भी 100% मिलता है क्या? हाँ ये वही मैं आपको hardly see, we will hardly get 50% success. yes. Hardly get 50% success rate. But what those 50%? I have showed you 33,500. That 33,500 800 point was here. तो हम लोग देखे ना अभी थोड़ा देर पहले. What was that 800? Just 800 was here. From 800 to 0. अभी आप बोलो आ रहा है. कैलकुलेशन ही आता है बट हाँ अच्छा है. ठीक है. अभी आप सपोज करो here you bought 34,000. अभी बोलो आ रहा है. सर जैसे एंकर वीएफ का जो मंथ का लो को अगर ब्रेक कर रहा है तो पूरा बेरिश हो जाएगा. जब मंथ का लो वाला को ब्रेक कर रहा था, ये सब तो नीचे रहेगा बाय डिफॉल्ट. जी. पूरा बेरिश स्ट्रक्चर. अभी क्या है, मार्केट इज इन कंडीशन. मैंने कल सुबह आपको क्या लिखा था कि वी आर इन अ लिखा था ना जी. मैं आई वाज यूजिंग लॉन्ग टर्म. इस 15 मिनट का स्टार्ट या
ठीक है जी दोनों लाइन का और ट्रेड का सिग्निफिकेंस समझ में आया कि इफ वी आर जस्ट हियर ठीक है एंड वी आर सीइंग दैट द बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू रिवर्स देखिए आपको ट्रेड तभी लेंगे जब बैंक निफ्टी आपका बिना ट्रेड तो इंट्राडे में वी डोंट ट्रेड अगेंस्ट विनर but that good trade will be a highly rewarding ठीक है यस I'm confusing why confusing it's confusing I have muted everyone who was this confusing Bhai, who was you confusing? Please tell your name. I will unmute you first. Is it confusing? Pratap. Anything confusing? Hello, Pratap. हाँ बोलिए प्रताप जी, I have unmuted you. Hello. सर वो नीचे वाला लेवल के लिए ना 34,000 बोल रहे थे नीचे लेवल वो 33,000 है ना ये 33,000 है मतलब आप यहाँ का ट्रेड के लिए भी आप 34,000 बोल रहे थे वो कंफ्यूजिंग था इसलिए नहीं भी दादा मतलब the throw was wrong. Here the things are written. anyone काफी बार आपने 34,000 बोले थे सर तो बट वो मैंने वो नीचे वाला ये रख के दैट वाज okay maybe दादा मैं थ्रो क्या बोल रहे दादा तो एक बार सिनेरियो आप थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर दें इसीलिए एक बार वो लेवल सही तरीके से एक और बार बताइए बिकॉज़ वो नंबरिंग के हिसाब से वो लैंग्वेज भी थोड़ा इंग्लिश में जो कॉम्बिनेशन है उससे कंफ्यूजिंग हो गया I will just explain you by this. with सही लेवल सर बिकॉज़ वो 34,000 तो sorry to Are not at all sorry dada see why I am keeping it interactive so that we can clear all these doubts as there is no point having interactive discussion so this is the 32,500 price trade सर नहीं उसी चार्ट में बोले सर बिकॉज़ आप एक मिनट I will just 32,500 it expired as 0 why it is showing the it was 33,500 see here what we are seeing on this day the high is just below this level correct yes 27 June let us go to 27 June the 15 minutes start this will clear the things in our time so this is 15-minute candle this yellow line is VWAP line this made a high it starts to trade below this yellow line yes you can see the VWAP 34,057 you can see this VWAP yes see it is displaying on my screen 34,057 correct 34,057 yes we know this is the highest VWAP yes sir coming from the highs yes sir Bank Nifty is trading below 34,057 which is the VWAP for the day so what will be our trade if Bank Nifty is below VWAP there is trade then come here this call correct yes suppose see no one will go and sell this call but I am just showing you how this works this call is also going below VWAP yes sir so this is a trade which is coming pure and simple trade I am just trying to show you if we are selling here based on this line if this reversal is happening then we can get a very beautiful trade with a 100 or 50 points stop loss. Here our stop loss is around 34,150 and what we have got till 33,400 means this call means this anything which you have sold is 34,000 even if you have sold this 34,000 call ATM call it becomes 0 if you have sold some deep ITM call 33,500 call also you have got 700 to 800 calls if you have bought put see whenever we buy options we buy ATM or ITM we will never buy OTM so if you have bought this weekly options
this 34,000 put, then maybe it was trading around 200 rupees and it expired around 700 to 800. What was the stop loss? Your stop loss, if you go and see this 34,000 put, you just see. AVAP level होगा During the day it will be VAF. So the zone near the AVAP is a high risk one. See here, your trade started here. Sir. You got once it stopped out here because it is going below this line. Yes, sir. This yellow line is our VWAP line. When the trade goes below VWAP, we will not trade. Again, you entered here around 400. Sir. And then slice them. Where you will exit, I don't know. Whether you will exit at 820 or you will exit at 570, and I don't know. Sir, but if I am a trader, if I am entering option at 400 rupees, I will be very happy at 56. This is a fact. So do we need to wait for a candle closing? Dana, this is a 10 minutes candle. See, when we are seeing the chart on a 10 minutes candle, we will get out of the trade once it goes below the level. When we started the session, I told you if the VWAP is 120, Yeah. your stop loss can be 118. But your stop loss cannot be 116. Okay. Because see here VWAP is 380 and the low of the candle is 330. 50 points. Will you wait to give back 50 points? Why I will exit it as 380. I will exit maximum by 370. 370. Maximum by 370. I will not keep my stop loss below. 1 to 2% below VWAP is okay, but not above. Okay. Yeah. Clear है कि how you can take this trade with Yes. high probability trade. Suppose if the market reverses very good, we are giving those 50 to 100 points, and then we will take a bullish trade. ठीक है? Yes, sir. Sir, intraday में it was always flash. अब जो भी move आया था, it was gap up gap down. तो इसको what it was last week was sorry. मैंने इनका last week बहुत पैसा. तो भी last week में खाली gap up gap down में move आ रहा था, बाकी दिन भर उसको फुल दिखा रहा था. कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. बट जो अपना सेटअप है वो तो दिखता होगा. We cannot मतलब change our trading style or change our trading pattern based on one day. We have to do what we are doing. right. One needs to do your voice is Yeah, someone voice is coming back. Echoing. your voice only echoing from someone. I will mute everyone. No, sir. 2 questions, sir. दादा किसी का voice जैसे काफी डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे. Loudspeaker. Yeah, I have muted everyone. Now tell me who wanted to ask the question. In the chat, just tell your name. Please explain green AVWAP. That green AVWAP is coming from the monthly AVWAP. From the 27th May first trend. I think it's seekho. Yeah, seekho. Seekho, yes. बोलिए सेठ जी. दो क्वेश्चन था. एक ये कि जब हमारा बॉक्स ट्रेडिंग हो रहा है सो जिगजैग, तब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम हाई पे जाएगा या बेयरिश होगा या लॉन्ग जाएगा. तो माय व्यू इज हमको वहां पर ट्रेड लेना ही नहीं है. हेलो. ये करेक्ट है? एकदम दादा आपको हेलो. आप ये आप कैंडल देखिए. Yes. आप इस कैंडल को कैसे ट्रेड करोगे? मैं तो नहीं ट्रेड करता. Sorry? इस समय क्या होगा? 3 स्टॉप लॉस लगा, डब्बा बंद करो. Sorry, I'm busy. Can you just call me after an hour? Just call me after an hour. देखिए, if you don't know when you will close, then you will never be able to close. डब्बा क्लोज करना. आपको पता है लास्ट थर्सडे जब पूरा दुनिया का पैसा लगा सेलिंग में, I made huge. Not me, my full group went into because by 11:30 we were closed. We made a lot of money in the first move, then again we made money in the second move, then we closed. Because दो बार पैसा बन गया और अपने को नहीं करना, we have made enough money. We just closed the day for the day. We were trading 170%. ठीक है? By that time everyone know how to trade. See, I never say my मतलब मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ. लेने के बाद मैं बोलता हूँ देख भाई इसमें मेरा पैसा था, मैंने ये ट्रेड लिया था. ठीक है? तो लेकिन आप तब तक इतना सेटअप सीख लोगे कि आपकी कॉल और पुट समझ में आ जाएगा आपको कि आपको कॉल बेचना है कि पुट बेचना है कि कॉल लेना है कि पुट लेना है.
हमने दोनों साइड पे पैसा बनाया, हमने डब्बा बना, सबने डब्बा बंद कर दिया। उसके बाद वो जो जिगजैग हुआ ना, नीचे से 800 पॉइंट का जो हुआ, हम लोग किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेडिंग एट ऑल। तो आप सोचिए, जो पैसा बनाया था वो तो लेके जाता। मेरे को याद है उस दिन का, मैंने एक कॉल बेचा था, आई स्टिल रिमेंबर, आई सोल्ड वन कॉल अराउंड 120, I exited around 17. Then it made a loss 7. From 7 it ran to 350. मेरा क्वांटिटी आप सोच भी नहीं सकते हो क्या क्वांटिटी थी। Within 3 or 4 candles, from 7 it made higher 4. सोचो 7 रुपए का ऑप्शन साला 200 रुपए। कहीं तो आपको रुकना होगा ना दादा, कितना पैसा कमाओगे? सर इसलिए पूछा था क्योंकि जब आप अपना इसका चार्ट में जाते हैं ऑप्शंस का, वहाँ पे मान लीजिए एबी बी वैप के ऊपर है या नीचे है, बट देन इधर तो कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ऑप्शन चार्ट, अभी आप वापस से कल का सेट, ये जो मेरा पुट का चार्ट है, ये तो मेरे को क्लियर बता रही है कि इस पुट में मेरे को क्या करना है। देखिए मार्केट का जो लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर है, मेरे को पता है कि इट इज अ बेयरिश, और अभी पता है, देन व्हाट आई कैन सी दैट द मार्केट इज इन कंसोलिडेशन। ये डब्बा मैंने कल आप लोग को भेजा था, इफ यू रिमेंबर, वी ओपन राइट हियर, आई नो वी आर ओपनिंग एट द लोएस्ट जोन। After opening at the lowest zone, what I am seeing that we are following the green lines. Just because we are opening at the lowest zone, the put are trading below VWAP, I will go and buy put. ऐसा तो मेरा सेटअप है ही नहीं। मेरा सेटअप पुट बाई का कब होगा? जब ये इसके ऊपर, नहीं तो क्या तो मैं पुट बेचूंगा या मैं कुछ नहीं करूँ। ये तो मेरे को पता ना दादा, इस येलो लाइन के नीचे पुट इज ट्रेडिंग बिलो VWAP, आई विल नॉट बाय, आई डोंट हैव एनी बेयरिश पोजीशन और आई डोंट हैव एनी बेयरिश ट्रेड। अगर मेरे को बुलिश ट्रेड नहीं लेना, परफेक्टली फाइन, आई विल नॉट टेक। बट इफ दिस पुट इज ट्रेडिंग बिलो VWAP एंड यू विल टेल मी कि दादा आई विल बाय पुट because my larger structure is bearish, then okay, thank you, you can always buy. It's your money, you can do whatever you want. I won't come. Clear? Yes sir. Yes sir. अभी देखिए मार्केट कुछ भी हो सकता है, but when you are trading intraday, you have to follow the intraday price action. अभी why they are doing all these things? आप बोलोगे दादा फिर सारा ये सब करके फायदा क्या है? पहले आप बाइजर का जरूरत नहीं। We are doing all these things just to know when it will go above this, and then if it is going above this. अभी आप ये देखो, यहाँ से आपको क्या मूव मिला? From 35,700 to 32,300. What is the move? The move is of 3,000 points. बैंक निफ्टी में एक महीना में 3,000 का कितना पैसा होता है भाई? आप एक बिल्डिंग बना लोगे कि नहीं बना लोगे? हेलो, सब म्यूट है। सब बिल्डिंग बनाने चला गया क्या? सर हवाई जहाज ले लेंगे। हवाई जहाज ले लेंगे, लेकिन आप बोलोगे क्या दादा आपने यहाँ पे बेचा, यहाँ पे कवर किया, दादा हम नहीं कवर कर सकते ना, मेरा खाता नहीं कवर कर सकता। This is practically not possible, but I know how to play this. There are this candle also where I played bullish also. ये कैंडल भी था दादा जिसमें मैंने बुलिश भी किया, और ये कैंडल भी जिसमें मैंने बेरिश भी किया, और कोई ऐसा कैंडल होगा जहाँ पे पैसा भी लगा होगा। सभी कुछ तो होता है ना, बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट इज हैपनिंग कंसिस्टेंटली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे कल, जैसे यहाँ पे मैंने बेरिश ट्रेड किया, ठीक है, हो सकता है, सॉरी यहाँ पे कल जैसे मैंने बुलिश ट्रेड किया, हो सकता है अगर ये मेरे को गैप अप मिलेगा कल यहाँ, ये है ना, ये तो देखिए अपने को क्लियर दिख रहा है, ये जो अगर मार्केट कल यहाँ खुल के अगर नीचे जाना चालू करता है, जस्ट इमेजिन अपोजिट, वी मे ट्राई टू फाइंड बेयरिश ट्रेड आल्सो। हेलो, तो चला गया क्या ट्रेड लेने? सर सब लोग म्यूट पे है। और सब लिख रहा है कि सब ट्रेड लेने चाहिए। आपको दादा व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज VWAP and EY to take a trade with 20 to 30 points stop loss to get 300 to 400 point reduction. It's nothing else. We will be successful not more than 50%. So every second trade is supposed to be a loss, right? एकदम बिंदास रहिएगा, but what we will do when we are losing 20 points, and when we are winning we are gaining. That's it. Nothing. So let us come back. When we will do sell trade or when we will do buy trade, it is based on IV. What is IV? I don't know anything. IV is, I think, I for India and B for UK. That's it.
please stay with me. Don't try to go higher than me, because then I will take the webinar. I will not be able to teach. These three columns we have filled up. Hope everyone knows why we are filling these three columns. So, there is one column which is left in weekly everywhere. There are stop loss, how to trade those things. Let us do practically. Then we will both clear. Because if I will tell you based on this picture, right, it is very easy for you to misguide you. Not to tell you, basically to misguide you. I can say कि मैंने यहाँ ये किया, मैंने उतना किया, मैंने इतना किया. When you are trading the live market, now when the Reliance is tracking 8%, then to sell a put, it requires something else. Correct? And I hope you will agree with me. I have already explained you why I am using it. Just for the tutorial purpose. Nothing else. We will trade a Nifty based on the calculation. 55 minutes is too high to trade a Nifty. Abhi, let us come back. I hope these columns are clear for everyone. Hello. Yes. Correct. Abhi, what we will do now? We will take a lunch. 10 minutes lunch. We are already आधा घंटा क्या बोले एक्स्ट्रा. अभी I think will take at least 11 hours. 10 मिनट का लंच ले ले प्लीज. यस सर. Yes. बिल्कुल दादा. दादा किसी का भी कोई भी प्रोग्राम है प्लीज पूछो. मैंने शुरू से आपसे 1 से 3 का टाइम ले रखा है. 1 से 3 से सबका टाइम लिया हुआ होगा. भाई टेकन द फ्री कॉल तो वो मेरा है. दैट इज माय. प्लीज अनम्यूट मी. प्लीज पहले रोके म्यूट उसके बाद वी आर 1:28 हुआ है. वी कम बैक एट 8:30. 10 मिनट हाफ आवर ब्रेक. हाफ आवर में तो इंडिया खत्म हो जाएगा. हाफ आवर बहुत मिनिमम 40. 10 मिनट में कैंडल. एक तो मैं 10 मिनट में खाना खाऊं आपको एक. It's 1:48. ये केला है बटर मेरा खाया.
मैं ज़्यादा स्पीकर चाहूँ से